and we shall go from moving forward. We basically going to try and look into this in a deeper way. So I'm going to pass the perspective on and want to know what opinion Dr. Zedi carries, and then we're going to have an overall from Karan as well, and various other people, and then we'll go through various occurrences which have occurred. Obviously, Dr. Furqan is with us as well. So that's the basic thing. We want to actually today kind of analyze in a sincere manner rather than picking a side, actually analyze what is going on strategically, geopolitically, regionally, and in terms of is this a geopolitical thing? Is this a micro thing? Is it an abstract thing? Or at the end of the day, is it even a religious thing? So डॉक्टर जैदी ओवर टू यू आप बात करना स्टार्ट करें तो फिर आगे कॉन्वर्सेशन डेवलप होती है तो हम आगे उसके अंदर देखते हैं गो अहेड असल में देखिए, ये एक बात हो रही थी कि हमास ने अटैक किया और ये बात हो रही थी ना कि इसराइल का उसका रिस्पॉन्स आया है, फिर ऐसे है। मेरा जो ओपिनियन इसमें ये है, मैं ये समझता हूँ कि ये शायद यार ये एक नेचुरल फ्लो है इस कॉन्फ्लिक्ट का। ये जो हो रहा है ना, ये होना ही था। बिल आखिर ये थोड़ा-सा इसमें एक चीज़ हम थोड़ा-सा इसमें एक मिसिंग लिंक जो है ना, वो ये है कि आप देखें इस खेल में कुछ नए खिलाड़ी दाखिल हो रहे हैं, कुछ न्यू प्लेयर्स दाखिल हो रहे हैं, शायद इस वजह से ये आपको इतनी ज़्यादा इसकी जो है ना इंटेंसिटी नज़र आ रही है। ये एक थोड़ा-सा है। देखिए हम हमास को टेररिस्ट कह दें, इसराइल को टेररिस्ट कह दें, बात यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाती। हमें ये देखना होगा कि आखिर कॉन्फ्लिक्ट कहाँ से शुरू हुआ है, किस तरीके से है और क्या इसकी वजूहात हैं? क्या ऐसा यहाँ तक यहाँ आज जो हम ये इतनी इंटेंसिटी देख रहे हैं, ये ऐसा क्यों हुआ है? ठीक है, एक तो ये वाली बात है। इसके पीछे ज्यूइश डायस्पोरा की कहानी तो है ही है। वो तो अपनी जगह मौजूद है, उसकी डिटेल्स में जाना शायद इतना मुनासिब ना हो। लेकिन थोड़ा-सा अगर हिस्टोरिकली हम देखें तो कुछ एक ज्यूइश ग्रुप था जिसको ज़ायनिज़्म के नाम से कहा जाता है। उन्होंने ये कहा कि एक स्टेट होनी चाहिए इस्राएल नाम की इन इलाकों में जो कि आप कहते हैं यूफ्रेटिस और नाइल के दरमियान का जो इलाका है, इसमें एक ज़ायनिस्ट स्टेट होनी चाहिए। अच्छा अब इन द इन दिस मीनिंग के बहुत सारे लोग जो जुडाइज़्म पर बिलीव रखते हैं, वो कहते हैं कि एक सॉवरेन स्टेट का कोई तसव्वुर नहीं है जुडाइज़्म में। ये जो ज़ायनिज़्म शुरू हुआ, ये टोटली रॉन्ग है। नंबर 1 बात इसमें ये है। थोड़ा-सा उसमें ये भी उनका कॉन्फ्लिक्ट आया फिर, लेकिन बहरहाल अब वो कायम हो चुका है। उसमें बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिज़्म ने जो है जन्म लिया, जिसकी वजह से अच्छा शुरू में जो है ना, मेरा ख़्याल है शायद फ़िलिस्तीनियन भी जो है इतना इसको ऐसे नहीं ले रहे थे। इज़राइलीज़ का भी ये ख़्याल था कि वो अच्छी फ्रेंडशिप कायम कर सकेंगे अरबों के साथ, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। और फिर आप देखते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है। अब इसमें एक नया पर्सपेक्टिव दाखिल हो रहा है जिसको हम थोड़ा-सा शायद फरामोश कर रहे हैं, मीडिया में आपको नज़र नहीं आ रहा है, वो है रशिया-यूक्रेन वॉर। रशियन इंटरेस्ट जो है ना वो मिडल ईस्ट में बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा है और मैं ये समझता हूँ कि ये जो आपको फ्रंट नज़र आ रहा है ना, ये भी शायद इसका ये सेकंड फ्रंट है। फर्स्ट फ्रंट जो है वो रशिया-यूक्रेन है, सेकंड फ्रंट अब आपको मिडल ईस्ट में नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो हमास के पीछे हैं, एक पूरा अलायंस है जो नज़र आ रहा है और ये आगे जाते हुए ना एक बड़ी जंग में, एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता हुआ हमें नज़र आएगा। ये एक ओपिनियन है मेरा, एक जो एनालिसिस मुझे समझ आया है, जितना मैंने हिस्ट्री को पढ़ा है और इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ कई सालों से, मुझे ये समझ आता है कि शायद ऐसा है। जी। डॉक्टर रनर मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस करना चाहता हूँ अगर आप माइंड ना करें जी, हमें बोलिए। कहीं से तो एनालाइज करने के लिए इसके अंदर डीपर जाने के लिए we जी, will have to look into how and why it began now अभी क्या हाँ, चेंज हुआ है दुनिया के अंदर जिसके बदौलत एकदम से something like this has come out of nowhere Hamas is हाँ, not even a global organization जी, ठीक है। तो ऐसी कौन से रिसोर्सेज हैं ऐसी क्या चीज़ें हैं दैट दिस हैज occurred
इसके पीछे ऑब्वियसली 2-3 जियोपॉलिटिकल बातें सामने आ रही हैं व्हिच पीपल हैव बेसिकली स्टेटेड. But again, those are gray areas. But if you're aware, आप बताएं आपके ओपिनियन में क्या है, and then देखिए, we'll ask one question हाँ, to others. Then. हमास का जितना अनप्रेसिडेंटेड अटैक हुआ है ना, और जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है मोसाद का, इसमें कहीं ना कहीं मुझे जो है ये महसूस होता है कि इसमें रशियन जो है वो जो अलायंस का जो फैक्टर है ना वो मौजूद है, कि इतनी कैपेबिलिटी हमास के पास नहीं है कि वो मोसाद की इतने बड़े पैमाने पर इतने बड़े लेवल पर जो है उसका इंटेलिजेंस फेलियर कर सके। उसमें कहीं ना कहीं जो है रशियन हुआ है। रशियन क्यों है इंटरेस्ट, सवाल यहाँ पर ये पैदा हो जाता है ना शाह जी, कि रशियन इंटरेस्ट क्यों है। देखिए, इसमें थोड़ा सा फिर हमें जो है ना रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन चर्च को जरा देखना पड़ेगा, उसकी हिस्ट्री को पढ़ना पड़ेगा। क्योंकि देखिए, जो सेप्लिका है वो वहां पर मौजूद है अभी भी यरूशलेम में। कोई भी क्रिश्चियंस का जो एक थर्ड फैक्टर है, इसमें मुस्लिम्स और जुडाइज्म का तो था ही था, यानी ज्यूज का तो था ही था, लेकिन इसमें थर्ड फैक्टर अब दाखिल हो रहा है जो कि एक रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी का है। उसमें वो क्यों है, वो एक बहुत फिर बड़ा एक सवाल पैदा हो जाता है कि आखिर कैथोलिक्स क्यों नहीं है, कैथोलिक्स का क्यों नहीं इंटरेस्ट है इसमें। लेकिन अभी फिलहाल जो है ना वो रशियंस का इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। देखिए, 2015 में सीरिया में जो इन्वेजन हुआ है, सीरिया में जो इंटरेस्ट पैदा हुआ रशिया का, वो ऐसे ही नहीं हुआ। उसमें बहुत सारी वजूहात हैं कि आखिर क्यों हुआ। बशार उल असद ने उनको दावत दी, वो अपनी जगह मौजूद है, इनविटेशन का सिलसिला है। लेकिन शायद कहीं न कहीं इसमें जो प्यूटिन के पीछे जो क्या कहते हैं, इसमें जो प्रीस्ट हैं, क्लर्जी है, वो शायद एक फैक्टर, एक डोमिनेटिंग फैक्टर के किरदार अदा कर रही है कि उन इलाकों में जहाँ से क्रिश्चियनिटी शुरू हुई, वहाँ पर क्रिश्चियन इन्फ्लुएंस होना चाहिए, क्योंकि मुस्लिम इन्फ्लुएंस है, यहाँ पर ज्यूइश इन्फ्लुएंस नज़र आता है, आखिर क्रिश्चियन कहाँ है? तो शायद मुझे ये लगता है कि इसमें ये चीज़ उनका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है और इसी वजह से हमें इंटेंसिटी नज़र आ रही है। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अब इसमें ज़ाहिर-सी बात है, आप देखिए व्लादिमीर पुतिन के बयानात को देखिए, स्टेटमेंट्स को देखिए, तो उसमें कहीं न कहीं पैलेस्टीनियन फैक्टर की तरफ सिम्पैथीज़ नज़र आती हैं, कि वो अब सिम्पैथीज़ उनको नज़र आ रही हैं, उनकी इंटरफेरेंस बढ़ रही है, वो चाहते हैं कि एक किरदार अदा करें। यूक्रेन वॉर में उन्होंने सब कुछ किया है। इस पे पीछे आप देखें तो आपको ईरान की उनको बिल्कुल सपोर्ट नज़र आती है। ईरान एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जो कि नज़र आ रहा है। इसके साथ-साथ हिज़्बुल्लाह भी है, लेकिन अगर आप इन द होल रन देखें तो यूक्रेन में भी आपको ईरान के साथ बड़ा ही कोऑपरेशन नज़र आएगा। मसलन शाहिद ड्रोन्स जो सप्लाई किए ईरान ने रशिया को, उन्होंने एक बहुत डोमिनेटिंग फैक्टर रोल प्ले किया है यूक्रेन वॉर में। तो वो एक चीज़ नज़र आ रही है आपको कि ये एक साफ वो है, कोऑपरेशन है। यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ, एक रशिया जो एक क्या कहते हैं इंटेलेक्चुअल हैं, उन्होंने कहा था इस जंग के जो हम कर रहे हैं ना वेस्ट के साथ, जो रशियन एम्पायर जिसको मैं कहता हूँ कि रशियन एम्पायर के साथ जो वेस्ट की जंग है, ये एंग्लो सैक्सन जो एक डोमिनेटिंग फैक्टर है पूरी दुनिया में, ऑर्डर है, उसके साथ जो रशिया की जो वो एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, जो कशमकश है, उसमें 3 फ्रंट इन्होंने कहा था कि इम्पोर्टेंट है। तीनों फ्रंट बहुत इम्पोर्टेंट है। एक कैस्पियन फ्रंट बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि ईरान के रास्ते से जाता है। दूसरा जो है ये यूक्रेन वॉर जो आप देख रहे हैं ना, कि ये उसका वो है। और तीसरा फ्रंट जो है ना, वो मिडल ईस्ट को, सीरिया को और इनको करार देता है। कि ये है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। और ये मैं आपको बता रहा हूँ, करीबन उसने 7 या 8 साल पहले ये बात की थी। अब वो आपको चीज़ होती हुई जो है ना ऑन द ग्राउंड नज़र आ रही है, कि ये भी एक फ्रंट है, इसी उसका जो एक बिग वॉर में तब्दील हो रहा है। वर्ल्ड वॉर 3 का एक सिनेरियो है, पूरा एक स्टेज है जो तैयार हो चुका है, और ये आहिस्ता-आहिस्ता इसके जो लेवल्स हैं ना वो खुल रहे हैं। आपको मज़ीद इसमें जो है ना इंटेंसिटी अब नज़र आएगी। अभी आप देखिए कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर हैं, जो दमास्कस पहुंचे हैं, उन्होंने सबसे पहले ये स्टेटमेंट दिया है कि अगर गजा पर कंटिन्यूएशन ऑफ द बॉम्बार्डमेंट होती है तो फिर हिजबुल्लाह जो है ना, वो जो नॉर्थ इसराइल में और सदर्न लेबनान में जो है एक नया फ्रंट ओपन करने में जस्टिफाई होगी। तो ये जो उनका बयान है, जो स्टेटमेंट है, मेरा ख्याल से काफी इंपॉर्टेंट है इस सूरत में, कि वो नजर आ रहा है। इधर जो इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो बयान दिया, जिसको ट्रंप ने भी कोट किया है, उन्होंने भी ये कहा है कि देखिए, हमें उम्मीद ये है, इजरायली डिफेंस मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि हमें उम्मीद है कि हिजबुल्लाह नहीं ये फ्रंट खोलेगी। तो ये एक एंग्जाइटी
बिटवीन द लाइंस ऑफ द इस्राइली फ्रंट भी नजर आ रही है हमें कि उनको एंजाइटी है कि कहीं ये एक बिग कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होना हो जाए। ग्राउंड इन्वेजन की बात हो रही है, अभी देखते हैं कि ग्राउंड इन्वेजन क्या है। ग्राउंड में जाते हैं तो अर्बन वॉरफेयर का सामना करना होगा। करीबन करीबन 15 to 30,000 जो है हमास सोल्जर्स मौजूद हैं उस अर्बन कॉन्फ्लिक्ट में। कितना अच्छा होगा। आर्मीनियन आजरबाईजान की जो वॉर हुई है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर हमें नया ये मॉडर्न वॉरफेयर में ये चीज समझ आई है कि जो टैंक्स है ना वो इतने यूजफुल नहीं है अब वॉरफेयर में। वो इस वजह से कि जो ड्रोन्स होते हैं वो ऊपर से बम्बार्डमेंट करते हैं, छोटे छोटे बम्स गिराते हैं, जिसकी वजह से जो है ना कि ये जो टैंक्स जो होते हैं वो यूजलेस हो जाते हैं। तो ये एक चीज नजर आ रही है। डिपेंड करेगा कि इसराइल की स्ट्रेटेजी क्या होगी। वो स्ट्रेटेजी को हम देखते हुए फिर शायद एनालिसिस आगे मजीद दे सकेंगे। जी शादी। हेलो। Yes, Shaji, you're mute. Shaji, you're on mute. Sorry about that. तो डॉक्टर रनर, थैंक यू वेरी मच सो फार। मेरा ख्याल है we'll go to other speakers as well और फिर हम आपके पास वापस आते हैं। In the middle, if you have something to say, feel free to say. Obviously, after the other person has interjected, because I think you have lots of opinions in these regards. At this stage, we're just trying to like overlay the entire thing, because this is a very multifaceted kind of a situation. Every person you speak to, depending on their background and the information they have, वो उनका इस पे अपना ही एक opinion तो कुछ बातें जो आपने कही हैं they are very relevant in terms of global geopolitical situation, और कुछ बातें opinions हैं which can be discussed. So Karan, I'm coming to you now. How do you view this? You obviously reside in the UK, and you know today there was a huge protest Yeah, in London as well for Palestine. yeah, I've And seen that. obviously anti-Semitism is on the rise. So go ahead. आपका इस पे entire चीज पे क्या take है? First of all, मेरे को अनम्यूट कर दिया। जी जी Yeah, बोलें। first of all, I wanna say सबसे बड़ी बात तो ये कि जो लोग innocent लोग मर रहे हैं ना, I feel sorry for them and it shouldn't happen. ये होना नहीं चाहिए। बच्चे बूढ़े like you know any they don't deserve like you know this kind of brutality from any side. And इससे इससे जो आम इंसान है उसके उसको फर्क तो पड़ता है like you know people like us who have nothing इस कॉन्फ्लिक्ट के साथ हमारा कोई ऐसे पर्सनली कुछ नहीं है लाइक यू नो एज कमिंग फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम इंडिया बैकग्राउंड। अब ये क्यों हो रहा है इसके पीछे लाइक यू नो हु बिहाइंड दिस एंड व्हाई वुड अगर आप मान भी लें कि चलो अगर पैलेस्तीन या हमास ने जैसे वो क्लेम कर रहे हैं कि उन्होंने किया है, तो उनको पता भी तो होगा कि उनकी व्हाट इज द पावर ऑफ इजराइल हैव या अदर सपोर्ट दे हैव फ्रॉम द वर्ल्ड, हाउ दे गोना यू नो बैकफायर। और जैसे उन्होंने वापस आना है, जैसे उन्होंने अटैक वापस रिवेंज कर लें, आप जो मर्जी कर लें, तो वो भी उनको पता होना चाहिए था कि ये मतलब कि अगर अगर वो करेंगे ऐसी हरकतें तो फिर दे गोना हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस। और वो अब फेस ज्यादातर जो हमें यहाँ जो सोशल मीडिया से पता लगता है वो ज्यादातर तो इनोसेंट लोग ही हैं दोनों तरफ से। एंड द इनोसेंट पीपल हैव टू फेस इट। और जिन्होंने कर दिया या जिन्होंने मार दिए या उनको तो चलो उन्होंने न्यूट्रलाइज कर लिया होगा सिक्योरिटी फोर्सेस ने, बट नाउ इट्स इनोसेंट पीपल टर्न। एंड हाउ लॉन्ग इज गोना गो, इसका कोई एंड ही नहीं है। और इसका आई वुड से कि आई एम जस्ट अ लर्नर है, मुझे तो इतना इसके कॉन्फ्लिक्ट के बारे में इतना डीपली पता भी नहीं है। एंड आई नो इतना मुझे पता है कि देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन Jews एंड Muslims इन फिलिस्तीन एंड गाजा, इजराइल एंड उसमें है। वो तो हम को सबको भी पता कि टाइम टू टाइम उनकी झड़पें होती रहती हैं, वो लाइक यू नो अप टू दिस एक्सटेंड जाते ही हैं, बट दिस टाइम इज गॉन टू नेक्स्ट लेवल। ये तो कुछ और। एंड अगेन बिफोर आई फिनिश, मैं तो ये कहूंगा कि यार जो इनोसेंट लोग हैं वो नहीं मरने चाहिए, कोई किसी की तरफ से हो, दे ऑल डिजर्व टू लिव एंड हैप्पीली।
No one should die. I'm feel sorry. I really, from the bottom of my heart, I feel sorry for the people those have died, innocent people, and it's very heartbreaking for anyone who's watching it. Thank you, guys. Thank you. Ji, I think we should go to other speakers. Naima ji has joined. Naima ji, you know the मैं topic. यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहती हूँ। जी, go ahead. करण भाई, आई अंडरस्टैंड कि अगर कोई किसी पे अटैक करेगा तो उसको रिएक्शन आएगा, ठीक है, एंड we all understand that, ठीक है, every action has a reaction, but do you realize that this was not exactly an action? What Hamas did, it was not an action, it was also a reaction to all the killing that's been happening since 2008. Right, we cannot just turn a blind eye कि नहीं, ओ उसने तो मार दिए लेकिन तुम्हें नहीं करना चाहिए, because Israeli innocent. क्यों? वो जो गाजा स्ट्रिप में जो innocent लोग मर रहे हैं उनका क्या? वो मरते जाएं, वो collateral damage है, but nobody should attack Israel. I mean, I understand nobody should do that, but it was उसको उनको force किया गया है ना, मतलब of course अब आप एक लोगों से उनकी सारी जो साजिशें हैं सब कुछ ले ले, आपने उनकी कंट्री ले ली. At this point, I don't think those people has anything left to lose. I don't think they care what the world thinks. I don't think they care कि उधर से वो अटैक होगा, इतना खतरनाक अटैक होगा. Those attacks been happening for the longest of time. It's like वो मैं एक वीडियो देख रही थी, उसमें एक बंदा एक्सप्लेन करता है इस तरह कि एक बंदा आ गया तुम्हारे घर में, ठीक है, उसने तुम्हारे घर पे टेक ओवर कर दिया, तुम्हारी फैमिली मार दी, लेकिन तुम्हें बंद कर दिया सेलर में, ठीक है, तो मार पीट की तुम्हें सेलर में बंद कर दिया, ठीक है. तुम्हारे जो उसके जो बंदे के जो पड़ोसी हैं वो सब कह रहे हैं कि नहीं ठीक है, वी सपोर्ट हिम एंड एवरीथिंग. फिर वो सेलर से निकलता है और वो बंदा कहता है कि आई हैव रीच्ड अ पॉइंट वेयर आई एम गोइंग टू बर्न डाउन दिस हाउस, ठीक है. और वो जो सारे पड़ोसी हैं वो कहते हैं कि ओ ये तो ये गलत कर, व्हाई इज ही बर्निंग डाउन द हाउस. द अदर गाय किल्ड हिज फैमिली, बीट हिम अप, टुक ओवर हिज प्रॉपर्टी, and everybody is blaming the guy for acting this way. He has nothing to lose. मेडूसा, यहाँ पे मैं जरा ऐड ऑन करना एक मिनट. देन मेडूसा, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना. लाइक यू नो, एज यू मेंशन कि उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे एंड दे फाइटिंग इट बैक, तो फिर बात ही खत्म हो जाती है. लाइक इट वाज हैपनिंग. तो फिर बात करने की कोई बात ही नहीं बची है. तो इट्स ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट एनीवे. Sid, आप पहले चलें and then एक second. To be honest, I mean, even though it's in the title, I will not call it conflict as such. Conflict is when two equal sides fight with each other. You call it a conflict. जब एक बंदा बिल्कुल निहत्था हो और दूसरा बंदा उस पर बार-बार अटैक कर रहा हो और एक वहां से सिर्फ एक ही अटैक. I don't think Israel and the Gaza Strip, the Hamas, are on the same level. So I don't think it's per se a conflict. उसके अलावा फरमान भाई, आई वुड लाइक टू शेयर के हाउ इज इट कम्प्लीटली इनइक्विवोकल. एक तरफ सिविलियन कैजुअलिटीज हुई हैं ड्यू टू रॉकेट लॉन्चेस, ठीक है. आमतौर पे रॉकेट लॉन्चेस के अंदर जो उनसे लोग मारे जाते हैं, दे आर, जिस वक्त अमेरिका करता है या इसराइल करता है तो लोग कहते हैं कि इट्स कैजुअलिटी ऑफ वॉर. मैं आपको डॉक्यूमेंटेड इंटरव्यूज थोड़ा छोटा सा एक उसका पार्ट दिखाता हूँ इजरायली सोल्जर्स के, जिन्होंने बताया है कि हम क्या करते रहे हैं. what they have been doing is actually not casualties of war. What they have been doing is picking out people and killing them intentionally, knowing full well that they have completely captured them. Sid, मेरा ख्याल है like just wait a second. Let's get a round table opinion. सबसे एक बार first statements ले लें and then we can move to, क्योंकि काफी like I know you and the team have done a lot of research, बहुत चीजें होंगी, but let's get the initial opinions of all the panelists and then we can move. If it's okay, Sid? Sure. बल्कि नाइमा जी भी आई हैं. नाइमा जी मेरा ख्याल है कि नईमा जी या अरसलान joined first. Arslan bhai, if you can unmute and give your opinion, thoughts on the issue, and then we can move to Naima ji. Assalamu alaikum.
या इस बारे में मतलब टू बी ऑनेस्ट मैं अभी सब कुछ सुन रहा हूँ। माशाल्लाह सबने मतलब डॉक्टर ज़ैदी हो गए, अभी क्या सिद्दीकी और शाहजी, मर्यूसा, फुरकान भाई, आप सबने अच्छे जो कहते हैं वो दिए हैं अपना कहते हैं एक्सटेंसिव ओपिनियन दिए हैं। देखिए मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे एक बात इस वक्त समझ नहीं आ रही है कि मतलब ये अटैक जो है हुआ क्यों है, लेकिन कि मुझे अब कभी अब जो मुझे लग रहा है ना कि यार जब इंसान को अपनी मौत नज़र आ रही होती है ना तो फिर वो मतलब ऐसे ही करता है। और मुझे यही इस दफ़ा लग रहा है कि ये जो अटैक था गज़ा में वो यही था कि यार हमें उन्हें उन्हें अपनी मौत बहुत मतलब क्लियर नज़र आई थी कि यार अब कुछ भी कोई चारा है ही नहीं कुछ करने का, तो मतलब उन्होंने अटैक कर दिया। और एक और बात है कि इस अटैक से मतलब देखा जाए तो यार मतलब ये कि अभी मतलब इससे पहले भी मतलब ये कि उनकी मौत हो ही रही थी, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जहाँ पर ये सबसे बड़ा जो एक्सक्यूज़ दिया जाता है कि हमास है, हमास की वजह से हम लोग कर रहे हैं अटैक। अपना वो है अपना वेस्ट बैंक, वो 2014 से लेके अब तक ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। मतलब वहाँ पर इतने ज़्यादा क्या कहते हैं घरों को पे कब्ज़ा किए गए हैं, इतने ज़्यादा घर मतलब ले लिए गए हैं। उसकी वजह से अब वो बिल्कुल ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उसके अलावा पिछले साल शेख चिरा का भी इंसिडेंट की बात थी। तो बात यही है कि अब मुझे लग रहा है कि दिस इज़ मोर दैट either we're just gonna fight or we're gonna die. So we rather like we die fighting. ये वाला मुझे मामला नज़र है। क्योंकि देखिए इसके बाद एक बहुत बहुत सारी चीज़ें बड़ी ओपन की खुल कर आई हैं। पहली बात ये खुल कर आई है कि आपका जो वो है ये क्या कहते हैं ये जो जो मतलब ये कि वॉर क्राइम्स हैं, ठीक है ना? इसराइल ने इस दफ़ा ओपनली किए, चाहे पानी बंद करना हो, इलेक्ट्रिसिटी बंद करना हो। ये आप मतलब ऐसे मतलब सिविलियंस पे नहीं कर सकते। दूसरी बात आप क्या कहते हैं सिविलियंस को आप इस तरह से कहो कि यार 1 मिलियन सिविलियंस को कहो कि आप छोड़कर जाओ और फिर उसके बाद आप उन्हीं क्रॉसिंग पर कहते हैं वो बॉम्बिंग कर दो, ठीक है? ये चीज़ से मतलब एक बड़ा साबित हुआ है कि यहाँ पर क्या मकसद उनका क्या मकसद है। लेकिन इस दफ़ा इनको फॉर द फर्स्ट टाइम खैर फॉर द फर्स्ट टाइम तो नहीं, लेकिन इस दफ़ा ज़्यादा जो है इंटरनेशनल प्रेशर इनको इस दफ़ा बहुत ज़्यादा आया है। ये ओपनली खुलकर नहीं मार पा रहे हैं, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है। लेकिन और थर्ड एक वो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि अभी जो पिछली दफ़ा ये सारे चाहे यूएई हो गए, ओमान हो गए और इवन सऊदी अरब भी बीच में भी कहता है ये इनसे कहता है बड़ी बातचीत चल रही थी इसराइल से कि नॉर्मलाइजेशन करना है रिलेशन उससे। लेकिन ये है कि फ़लस्तीनियों को कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा ये बात बड़ा क्लियर है अब्राहम अकॉर्ड के मुताबिक कि ये पूरा का पूरा टिल्ट जो है मतलब इस्राईल ही की हिमायत में हुआ था, फ़लस्तीन की कोई हिमायत में नहीं हुआ। कोई एक बॉम्बिंग छोड़े मतलब लिटरली जो इजिप्शियन बॉर्डर है, इजिप्ट से उनके बहुत सालों से ताल्लुकात है, बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, बल्कि इतने हैं कि उनका जो कहते हैं अभी का जो वो प्रेज़ेंट सीसी है उसने मतलब ये कोई 7-8 साल पहले कहते हैं वहाँ पर यूएन में खड़े हुए कहा था कि यार हम लोगों को इसराइल के साथ जो है अरब ममालिक को ताल्लुकात अच्छे करने की ज़रूरत है। और लेकिन बस ये है कि एक बात है कि मुझे जो डॉक्टर ज़ैदी ने भी कहा कि हिज़्बुल्लाह वो शायद मतलब वो वहाँ से फ्रंट से खोले। हिज़्बुल्लाह अनफॉर्चुनेटली नहीं खोलेगा, मतलब उसने थोड़ा बहुत क्या कहते हैं मारा तो है कुछ मतलब सोल्जर्स को, लेकिन बात ये है कि वहाँ पर इसराइल खुद अभी थोड़ा-सा मतलब वो उसने एग्रेशन दिखाया था तो वो सोल्जर्स मारे। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसराइल उस बात को कंप्लीटली इग्नोर कर रहा है। मतलब उसने कहा कि ओके फाइन, क्योंकि उनको पता था कि एग्रेशन उनकी तरफ से थी। लेकिन बात ये है कि उसको वो चाहते तो उस टाइम को वो मौका उठा के आगे बढ़ सकते थे, लेकिन नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मतलब वो कि उनकी स्ट्रेंथ साउथ लेबनान तक ही है, मतलब उसके आगे अगर वो बढ़ेंगे तो उनको उतना उनके लिए इतनी आसानी नहीं, उनको इवन शायद उनके मुल्क में भी क्या क्या कहते हैं उनको इतना सपोर्ट ना है। तो आई जस्ट वांट टू सी कि मतलब ये क्या किस तरह से क्या मतलब अनफोल्ड होता है। लेकिन आई जस्ट होप कि इसमें क्या कहते हैं मासूम लोग ना ही मारे जाएँ। क्योंकि देखें टू बी वेरी ऑनेस्ट अभी तक जो है मतलब इतना जो दर्द लोगों को हुआ है, मतलब वो मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ, वो इसलिए हुआ है कि इस दफ़ा इस्राएली मारे गए। इस्राएली सिविलियन मारे गए, जो कि डेफ़िनेटली चीज़ सही नहीं है। कोई आपको इस्राएली सिविलियंस हों या फ़लस्तीनी हो, लेकिन ये है कि एज़ लॉन्ग एज़ सिविलियंस फ़लस्तीनी हैं, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है मीडिया में।
वो जो कहते हैं बिहेडेड बेबीज वाली बात इतनी ज्यादा मतलब वो हुई व्हाइट हाउस तक में, मतलब ये नहीं है, इमेजिन करें कि वहां पर हुआ। फिर बाद में व्हाइट हाउस ने रिट्रैक्ट कर दिया उस स्टेटमेंट से, उन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, वी डोंट हैव एनी एविडेंस फॉर दैट। लेकिन 400 से ज्यादा, बल्कि अब तो मैं सुनो 600 बच्चे अभी शहीद हो चुके हैं, और वो भी इस तरह से कि कहते हैं हॉस्पिटल्स को बॉम्बिंग की गई, स्कूल्स को बॉम्बिंग गई, यूएन कहते हैं सर्टिफाइड स्कूल्स को, जिनको मतलब इनको कॉल आईडीएफ कर कर थक गए कि यार प्लीज डोंट बॉम्ब हियर, वहां पर भी बॉम्बिंग हुई है। लेकिन कहते हैं अब देखा मीडिया बिल्कुल खामोश है इस बात पर। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। Thank you, Arslan bhai. Naima ji, welcome, and please go ahead with your initial comments. जी थैंक्स वेरी मच। सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गई, मैंने अर्ली पोर्शन मैंने आप लोगों का नहीं सुना, बट एनीवे मुझे याद आ रहा है कि नेपोलियन बोनापार्ट ने जब एकरा पे हमला किया था एंड ही गॉट डिफीटेड एट दैट टाइम, इट वाज इन आई थिंक 1799। तो उसके बाद से उन्होंने, नेपोलियन ने एक लेटर लिखा था। बहुत सारी जो उन दिनों यूरोप में जू लॉबी थी, और बहुत ही वो, चूँकि ये हमेशा से बिज़नेस में काफ़ी आगे थे, तो उन्होंने बहुत बड़े-बड़े बिज़नेसमैन्स को लेटर लिखा। उसमें लिखा था कि भई क्योंकि इनको मुसलमानों से जो डिफीट मिली थी एकरा में, तो उसका बदला लेने के लिए, क्योंकि बहुत ही ह्यूमिलिएटेड फ़ील कर रहे थे, तो देन ही रोट लेटर टू ऑल दीज़ जूइश पीपल कि आप ऐसा करो, आप यहाँ आओ और यहाँ पे बस जाओ, क्योंकि यहाँ पे हमें आउटनंबर करना है मुस्लिम्स को। तो वो लेटर आप अगर आप चाहें तो आप ब्रिटिश म्यूज़ियम में भी उसका वो उसकी कॉपी है एंड इन अदर म्यूज़ियम्स। तो ये स्टार्ट था आई थिंक कि वहाँ पे कि अल्योर करना कि भाई यहाँ पे आ जाएं जूस, हालांकि वहाँ पे मुस्लिम्स रहते थे और मुसलमानों का था। तो उसके बाद से फिर आपको याद ही है कि कैसे-कैसे फिर नेथन, लॉर्ड रॉथस्चाइल्ड वगैरह आए। तो ये स्टोरी जो प्रोजेक्ट इज़राइल था, बहुत पहले का था, और किस तरह से फिर यूरोप में जब नाज़ीज़ वगैरह का हल्ला खड़ा किया कि हालाँकि एक बुक है जिसमें लिखा है कि भई वो इंग्लिश ऑथर की बुक है, आई डोंट रिमेंबर नेम, कि वो लिखती हैं कि इनको यूरोप में से जूस को निकालना था, तो ये फिर शुरू हो गया। और उसके बाद नाज़ीज़ का जो होलोकॉस्ट वगैरह वो तो हम जानते हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये जो ज्यूस को बसाना ही था, लेकिन ये क्यों किया गया कि भई फ़लस्तीनियों को निकाल के आपको बसाना है? भई उस वक़्त लैंड इतनी ज़्यादा थी, आप इनको दे देते वहाँ पे रहने के लिए। और फ़लस्तीनियों को जो 48-47 हम देख रहे हैं, जो फर्स्ट नकवा था, उसमें आप लाखों लोगों को वहाँ से निकाल रहे हैं। तो उसके बाद से ही ये आई मीन एक्सपोज़ हो गए थे कि भई ये प्रोजेक्ट है और यहाँ से इनको भगाना है। अब सवाल ये है कि भई इतने सारे अकॉर्ड्स हो गए, कैंप डेविड, ओस्लो, उसके बाद से वो चल रहे थे। लेकिन हर बार किसने ये कोशिश की कि ये अकॉर्ड्स ना हो और इनकी इम्प्लीमेंटेशन ना हो? जिसमें हम देख रहे हैं कि भई आपने फिर इत्साक राबिन भी कत्ल होता है और अपने ही जूस से कत्ल होता है, क्यों होता है वो भी सबको पता है। और ये जो राइट विंग जूस थे वहाँ पे अल्ट्रा राइट, तो उन्होंने कभी नहीं चाहा कि ये जो चाहे टू स्टेट सॉल्यूशन आपने दिया था, और किसी हद तक फतह जो फैक्शन है उन्होंने एक्सेप्ट भी किया था, मे बी ये हमास ने नहीं किया, लेकिन फिर भी एक लेवल तक ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि भाई दोनों जो है नेशंस अलग वहाँ पे रहेंगे, बॉर्डर्स मिले हैं, तो इसका एंड हुआ होता। लेकिन खुद मेरे ख्याल में जो राइट विंग है, ख़ास तौर से जो बिन्यामिन नेतन्याहू, ये लोग तो इन्होंने तो कभी चाहा नहीं कि ये मसला हल हो, और ये होना चाहिए। और इसमें जो ख़ास तौर से इसके वेस्टर्न पावर्स हैं जो भी साथ हैं, तो वो भी उन्होंने भी इसको इस तरह से, आपने देखा होगा फॉर द लास्ट मतलब 2014 के बाद जब सीज शुरू हुआ गाज़ा का, उसके बाद से आपने देखा कि वेस्टर्न जो एक स्टैंड था उस वक़्त कि भई टू स्टेट सॉल्यूशन, इनको अपनी ज़मीन देना है, एक्सपेंशन ऑफ सेटलर कॉलोनीज़ उस वक़्त तक कह रहे थे नहीं होनी चाहिए, उसके बाद से उस पे भी आँख बंद कर दी गई, और इज़राइल ने जिस तरह से एक्सपेंशन करना चाहा वो किया और इनको निकालते गए। तो अब अगर आप ये कह रहे हैं कि भई कल भी हम बात कर रहे थे, सॉरी, इस शाजी के साथ
हम कह रहे हैं कि भाई हमास को इस तरह से हमला नहीं करना चाहिए था जो किया उन्होंने। सवाल ये है कि एक तरफ से एक आपका एक मुल्क है जिसके पास सारी ताकत है, एयरफोर्स है, बाकी सारी चीज़ें। आप मुझे बताइए कि फ़लस्तीन की तरफ से कौन लड़ेगा? उनके पास कौन-सी फ़ौज है? उनके पास कौन-सा एयरफोर्स है? उनके पास क्या एम्युनिशन है कि वो भी एक फ़ौज, एक मुल्क दूसरे मुल्क से लड़ेगा और अपनी ज़मीन, अपनी जो भी उनका खोया है वो उसको हासिल करेंगे। इनके पास तो कुछ है ही नहीं। अब अगर ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन आप इसे कहें या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन कहें, अगर ये उठती है और ये अपना हासिल करने के लिए ये सब करती है, बल्कि ये तो साफ जाहिर है कि ये जो अकॉर्ड करने जा रहे थे अब्राहम अकॉर्ड को, जो अब लेटेस्ट उसका जो टर्न आना था सऊदी इजराइल, तो उसको भी एक सबटॉज करना था डेफिनेटली, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन सवाल ये है कि भाई अगर आप पिछले 14-15 साल से खामोश हैं और एक कौम को डेली मरते देख रहे हो, गोलियां खाते देख रहे हो, घरों से बेघर होते देख रहे हो और कोई इस पे बात नहीं कर रहा है, खामोश है, तो एक ह्यूमिलिएशन ये हम समझते हैं, क्योंकि मैंने भी काफ़ी देखा है और बर्दाश्त भी किया है। एक ह्यूमिलिएशन जो होती है ना, उसको आप किसी हद तक बर्दाश्त करते हैं। एक स्टेज उसमें आता है जब आप कहते हैं कि when nothing is left, then it's only your life. You have to now live. I mean, either you have to live it with it, या you have to die for it. तो यही सिचुएशन इस वक्त फ़लस्तीन में है। अब चाहे उसमें लिए हमास आए या फतह खामोश है, ये आप नहीं कह सकते, लेकिन हमास जो है वो कहीं और से नहीं आए हैं। हमास फ़लस्तीन के लोग हैं जो रोज़ क़त्लो ग़ारतगरी देख रहे हैं, और अगर उन्होंने ये किया, मैं बिल्कुल इसको कंडेम करती हूँ, करना नहीं चाहिए था उनको जिस तरह से ये किया। लेकिन उनके पास ऑप्शन भी क्या था? अगर उन्होंने ये किया, ऑप्शन यही चूज़ किया, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं, कोई सुनता नहीं है। पूरी जो मुस्लिम वर्ल्ड है वो खामोश है, वो अपनी दोस्तियाँ बौनहमी बढ़ा रहे हैं। वेस्टर्न पावर्स इज़राइल के साथ है। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ आप लोग मुझे बताएँ, अगर कोई ऑप्शन था उनका, क्या करते? दूसरी बात मैं कहना चाहूँगी अबाउट दिस जो रिएक्शन आया, और रिएक्शन से जो वर्ल्ड रिएक्शन है फ्रॉम द वेस्टर्न वर्ल्ड एंड द मुस्लिम वर्ल्ड, उससे आज ज़ाहिर हो गया कि भई दुनिया जो है ये तो बटी हुई है। ये मुस्लिम वर्सेस नॉन मुस्लिम वर्ल्ड स्टार्ट हो गया है, इसलिए कि जो भी वेस्टर्न पावर्स है उन्होंने ओपन खुल के वहाँ पे गए। भई ब्लिंकन वहाँ पे कह रहा है कि भई मैं आपकी सॉलिडारिटी में यहाँ पे आया हूँ। लेकिन अगर वो वहाँ गया, उसको फिर जाने की क्या ज़रूरत थी? वो उर्दुन भी जा रहा है, वो बेरूत भी जा रहा है, वो सऊदी भी जा रहे हैं, वहाँ पे क्या करना था? तो मुझे लग रहा है कि जो इनका फर्स्ट जो रिएक्शन था वेस्टर्न कंट्रीज़ का, ये खुद इसमें फँस गए हैं, और ये उसको डैमेज कंट्रोल के तौर पे अब आप इन्होंने देखा, थोड़ा-सा स्टैंड भी इनका चेंज हो रहा है, क्योंकि दुनिया ने देखा। आज तो ये खुद भी इस पे रिपेंट कर रहे होंगे कि भई इंटरनेट इतना क्यों आम हो गया कि लोगों के पास सोशल मीडिया है, क्योंकि आज तो कोई चीज़ खुफिया रहती नहीं, बंद नहीं रहती। आज ये खुद एक्सपोज़ भी हो गए, और इस डैमेज कंट्रोल को मेरे ख़्याल में जो इसीलिए ये कह रहे हैं कि वहाँ जो ये सीज़फायर या सेफ एक्सेस वगैरह ये सारी कुछ स्टार्ट हो गया है, और मैं समझती हूँ कि एक तो इसको स्पिल ओवर नहीं होना है, इसकी कोशिश हो रही है। दूसरा ये कि इज़राइल को थोड़ा-सा कंटेन कर रहे हैं कि ज़्यादा और मत करें, क्योंकि दुनिया में आप जिस तरह से एक्सपोज़ हो रहे हो, तो वार क्रिमिनल तो है ही वो नेतन्याहू, तो अब और ज़्यादा आप कर रहे हो। तो मैं समझती हूँ कि अगर इस वक़्त ये दोबारा ये मसला जिस तरह से उठा है, और अगर मुस्लिम वर्ल्ड चाहिए, तो इसको इस वक़्त किसी तरह से इसको हल करें, रिज़ॉल्व करें, ताकि ये लोग भी एक रिस्पेक्ट से रहेंगे, सुकून से रहेंगे और अपने वतन में रहेंगे। जी। अच्छा, मैं कुछ कह सकता हूँ? जी, जी, गो अहेड ज़ैदी साहब, बट अगर उससे पहले मैं देयर इज़ रुपेश साहब, उनका ओपिनियन ले लूँ एंड देन आई कैन गेट बैक टू यू इफ इट्स ओके? ठीक है, ठीक है। थैंक यू डॉक्टर साहब।
Rupesh, go ahead with the opening statement. Yeah, I want to make some points. I don't know how many of you have gone to Israel. I have been to Israel. I was some class, Tel Aviv University, so I know the situation. You know, if you go by the history of things, now you will understand that what is the problem between Jews and Muslims. Let me tell you, that land originally belonged to Jews. If you go by any history book, whichever, during the Roman period, there was war, and Jews were dispersed by the Romans, and they were so technically it was their homeland. Yeah, you can also, and there was a very famous goodbye. See you next year in Jerusalem. So I will take to the. You see, during the Ottoman period, when it was taken over, that the World War One, the Ottomans lost, and it came under British mandate, and they were, you know, Jews were there, and that land was not much inhabited. Even if you go by Mark Twain's description and others, this was a barren land, and when there was problems, Jews came to settle there to the homeland, and that was the thing. And they bought from lot of Ottomans and other Arabs who owned the land, and you can go and check that thing. It happened most of the time very, you know, and the other Arabs came to work for the Jews. Even the King Hussein of Jordan was very happy that the Israelis, the Jews, have made that land fertile, and it was their hard work. And you know, technically, when there was war, every time Jews accepted there was a famous, I don't remember the leader, he said, I would be satisfied with a piece of land equal to the tablecloth. So that was the problem. They had the problem, and they all the time they were accepting it, and it was Arabs who were attacking it, and every time they attacked, they were beaten back heavily. And I want to point the fact that Jews were also kicked out from many Arab countries. For example, see how many Jews are there in Libya, Iraq, in Baghdad, from Baghdad. A lot of Jews. So what about there? And they were not poor people. They have to leave their property, money, and then they had to move it because they had problems, and they were kicked out by. So they came, and so the situation used to change. You cannot dispossess one class of people from that land and say you cannot go and take possession. So the situation also changed. So you have to see in the perspective. And if you see why Hamas attacked it, you just go and read their charter. They don't give a damn about Palestinian people. Their mandate is that they will throw Israel in the sea, throw every Israeli into the sea. If you have this kind of mandate, and then what is to be said? They want to kill them, and they did it according to their mandate. It was well according to the mandate, and they don't care about. And now Israelis are well justified, in my opinion. I don't know what you have to say in exacting whatever they are. If you roll the stone, you cannot stop it. It will roll, and it will move by its very own momentum, and so that is happening. So and neither will any Israeli or Palestinian care about what outsiders has to say. So this is basically, I'm very sorry to say, it is the old Muslim-Jewish conflict. I don't see beyond anything like that. Thank you, gentlemen, for listening to me. Thank you, Rupesh. But the problem I see with, and the flaw I see in this argument is, you conveniently missed जब इनको यूरोप में इनकी like Jews के साथ जुल्म हुए, and because of that they were compelled to move from Europe, and they moved to Europe. They came back in certain migrations historically to this land, but जो major इनकी migration हुई है, and when they got the conviction was after the Holocaust. ठीक है? And you conveniently missed that, and you made it a Muslim-Jew problem. But उससे बड़ी बात ज़्यादा साहब एक चीज मैं कह दूं. But currently we are focusing on the current affairs जो कि अभी चल रहे हैं. Historic perspective पे we can do another room. Furqan bhai, I would like to say some things. मैं रुपेश को एक बात कहना चाह रहा था. आप बोलो, डॉक्टर ज़ैदी आप बोलो, फिर मैं आपके पास.
जी, देखिए रुपेश, अगर हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव को लाएंगे ना तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ये एक चीज को समझ लीजिए। देखिए, इसको समझिए कि आप ये इसको मुस्लिम एंड ज्यूज के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट बना रहे हैं, ऐसा ये बेसिकली है नहीं। पैलेस्टीनियंस जो कहते हैं वो कहते हैं हम यहाँ पर बहुत अरसे से आबाद हैं। जब ज्यूज हिब्रू पीपल आए थे उससे पहले के भी आबाद हैं। अच्छा, हिस्टोरिकली भी आप देखें, मोसेस के दौर में इस इलाके में एंटर हुए हैं, उससे पहले वो इस इलाके में मौजूद नहीं थे। पैलेस्टीन जिसे कहा जाता है ना, जो किनान का जो इलाका कहलाता था, ठीक है ना, किनान जिसको कहते हैं अरेबिक में और इंग्लिश में भी कहते हैं, वो जो इलाका था ना, वो जो एरिया था वो पैलेस्टीनियंस के उसमें था। उसको बेसिकली हमारे यहाँ हिस्ट्री में बनी अमालका के तौर पर कहा जाता है। बनी अमालका के लोग यहाँ पर मौजूद थे। फिर बाद में जो है ना किंगडम कायम हुई थी, वो किंग डेविड की, जो कि जिसको ये अपने उससे रिलेट करते हैं, और किंग सोलोमन की। तो ये थोड़ा-सा जो पर्सपेक्टिव अगर आप देखेंगे तो फिर ये तो इसमें फिर ये आप ये शामिल कर देंगे कि उनका हक है, तो फिर तो पैलेस्टीनियन का हक तो उससे पहले का भी है। सही है ना? तो इस चीज़ को इस तरह से देखिए कि यहाँ पर इमोशंस को नहीं, बल्कि ये देखिए कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट हो गए थे। तो एक तो मेडुजा ने जो कहा कि देखिए रिएक्शन है, बिल्कुल है। रिएक्शन है, एक्शन का रिएक्शन है। इमोशंस इन्वॉल्व हैं, उन लोगों पर बहुत ज़्यादा ज़ुल्म किया गया है, इसलिए हुआ है। लेकिन इसके पीछे भी जो है ना ज्यूज़ की एक थोड़ा-सा वो एक कहते हैं कि वो एक मेंटालिटी कायम हो जाती है। बल्कि ज्यूज़ कहना शायद गलत होगा। ज़ायनिस्ट की जो मेंटालिटी है ना वो थोड़ी-सी एक्सट्रीमिज़्म की तरफ जाते हुए है, इसलिए वो है। वरना अगर बेसिकली जुडाइज़्म का वो जो कॉन्सेप्ट मैंने कहा था ना कि उसमें सॉवरेन लैंड का कोई तसव्वुर नहीं है। बिल्कुल ये एक इस्लाम की तरह है कि जैसे इस्लाम में कोई नेशन स्टेट थी वो नहीं है। कोई भी जो है ना मुसलमान जो हैं वो सब बराबर हैं। कोई मतलब नेशन स्टेट्स में डिवाइड नहीं होने चाहिए। इसी तरीके से ज्यूज़ में भी यही है। ज्यूज़ में भी यही प्रॉपर है कि कोई एक स्टेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है? और बहुत सारे जो ज्यूज़ हैं वो इसकी मुखालफत करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एंड टाइम प्रोफेसीज़ में ये लिखा हुआ है कि अगर ज्यूज़ जाएँगे उस इलाके में तो उनको बहुत बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा अल्टीमेटली। इसलिए वो इस चीज़ को मना करते हैं। ये बहुत सारे जो स्कॉलर्स हैं इस बात को हाइलाइट करते चले आए हैं। अच्छा, एक तो ये बात हो गई। अरसलान ने जो कहा था कि देखिए कॉन्फ्लिक्ट, अब आप खुद सोचिए। अरसलान, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ जो मैं समझ रहा हूँ। बेसिकली मे बी आई एम रॉन्ग, यू आर करेक्ट, कि कोई ऐसा जो है कॉन्फ्लिक्ट नहीं स्टार्ट हो, कोई बड़ा वो ना हो, बल्कि यहाँ ही मारकुटाई चलती रहे और ये पैलेस्टीनियंस को मारा जा सके। लेकिन 2-3 फैक्टर ऐसे हैं जो कि बहुत स्पेशल हैं इस दफा। आपने ये कहा कि पहले ऐसा नहीं हुआ कि गाजा का पानी बंद किया गया है, ऐसे पहले करता रहा है इसराइल। लेकिन इस दफा जो है ना 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक बात ये कि यूएसएस जेराल्ड फोर्ड जो है वो ईस्टर्न मेडिटेरियन सी में दाखिल हो चुका है इस वक्त। और नेटो ने भी जो है ना ग्रीक वॉरशिप को कहा है कि आप जो है वो एंटर हों। देखिए ये एक नॉर्मल चीज नहीं है जो कि अमूमी तौर पर हमें इसराइली पैलेस्टीनियन कॉन्फ्लिक्ट में नजर आता है। वो कभी भी जो है ना नेवल जो ब्लॉकेड होता है करने की कोशिश की जाती है या वो ऐसा किया जाता है, या ऐसा नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि इस दफा जो है ना कि जो हालात हैं वो चेंज हैं। और जो ये बात कही गई कि मेरा ख्याल है नईमा जी ने कही कि ये हमास ने कहा, मुझे ऐसा लगता है कि इसके पीछे हमास अपनी स्ट्रेंथ को जानती है कि उसने करना क्या है, किस तरीके से करना है, क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो सब कुछ जानते हैं। आखिर इससे पहले क्यों नहीं किया उन्होंने अटैक, अब क्यों किया? ये एक सवाल पैदा होता है यहाँ पर कि ऐसा अटैक क्यों किया गया जबकि हमास को पता था कि इसराइल ब्रूटली अटैक कर सकता है। सही है ना? और वो करेगा भी, जो कि हिस्टोरिकल वो है। मैं ये समझता हूँ पूरी हमास ने इसकी प्लानिंग कर रखी है, उसको पता है कि उसने क्या करना है। और जब ये ग्राउंड इन्वेजन शुरू होगा फिर हम देखेंगे कि चेंजेस आती हैं या नहीं आती। अभी टू अर्ली टू से एनीथिंग। कोई भी जो है वो मेरा ख्याल है कंक्लूजन देना इस वक्त ठीक नहीं होगा। ये एक बड़ी वॉर में तब्दील होने जा रहा है जहां में हमें दूसरे फ्रंट्स भी ओपन होते हुए नजर आ सकते हैं। जी शादी। मैं यहाँ पे एक चीज ऐड करना चाहती हूँ प्लीज। रुपेश, you were talking about the Jews and Muslim issue. I just want to give you a small overview. Muslims and Jews have actually lived for centuries together. Even in Europe, Muslims and Jews areas were almost the same, right?
और जब कॉर्डोबा में उमैयद की हुकूमत थी, जूस वर थ्राइविंग देयर, ठीक है। उनको फलस्तीन से भी क्रूसेडर्स ने निकाला, उनको उनके साथ उनको यूरोप से भी वो क्रिश्चियंस ने निकाला। द प्रॉब्लम जूस ओरिजिनली हैव इज विद क्रिश्चियंस, नॉट विद मुस्लिम्स, ठीक है। हमारे थोड़े बहुत इश्यूज हैं, बट दीज एंटी जू माइंडसेट इट स्टार्टेड आफ्टर द क्रिएशन ऑफ इजराइल, just so you know that. So I don't know where you get your history from, but you need to double check it. अच्छा Okay. मैं ना दरअसल ये वाली बात को राजेश बैक अप आप करना चाहूंगा। एक सेकंड से चलो आप भी पहले बोलो। I think we should give Jha to respond back because couple of like 3 नहीं नहीं, people. of course we're going to go back to मैं दरअसल ना so ये Sid, go बात ahead. yeah I would just wanted to substantiate in regards to what Medusa said कि वहाँ पे अब इजराइल की मिलिट्री या उनके आर्म्ड फोर्सेस नहीं, उनकी जो उनसे सिविलियंस हैं मुसलमानों के साथ क्या करते हैं वो मैं आपको बाद में दिखाता हूँ। वहाँ पे क्रिश्चियंस के साथ क्या करते हैं ये आप ज़रा छोटी सी झलक देखिएगा। ये रही, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये स्क्रीन। शाह जी, इफ़ यू वुड बी सो काइंड, ये देखिएगा सर। Is the screen available? Yes, Sid. Yes. The Peaky Blinders are here. ये देखें, now these are civilians. ये ट्रीटमेंट है वहाँ पे हमारे क्रिश्चियन भाइयों का। ये तो चले कोई सिर्फ लड़के थे, वहाँ पे नन्स के साथ जो ये करते हैं वो तो उनके मुंह के ऊपर थूक देते हैं। अगर आप चाहेंगे तो मैं वो वाली वीडियो भी आपको डिस्प्ले कर दूंगा। मुसलमानों के साथ ये क्या कर रहे हैं मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि ओवरऑल जो राजेश भाई ने कहा कि भी इजराइली जोन से हैं वो तो लड़ना नहीं चाहते, ये मुसलमान ही जोन से हैं उनको बार बार तंग करते हैं, यहूदी जोन से हैं वो तो कुछ भी नहीं करते। मैंने जानबूझ के ना ढूंढी है एक ऐसी एग्जांपल जहाँ पे जो लड़की है ना वो नहायत ही शी इज कॉकेशियन लुकिंग एंड शी इज स्पीकिंग वेरी गुड इंग्लिश, सो मे बी considering that particular person does not look Arab, maybe you will have a little bit of more attachment to them. ये ज़रा देखिएगा कि एक very western looking person जो उनसे उसके साथ वहाँ पे क्या हो रहा है। Continuous supply of water and consume more than ये double. मैं ज़रा refresh कर देता हूँ। Hey Tyler, why don't you take a break and party with me? ये जी जी वो अपने बाल तक बेचारे जो उनसे यहाँ सही तरीके से वॉश I can't wash my hair because of the Israeli occupation. All of our tanks are out of water. We only get water every 15 to 20 days, hence the tanks. And if you're out of luck until the next refill. These water tanks are a staple on Palestinian houses in the West Bank to combat the chronic water shortage. But the problem isn't that there's not enough water. The problem is even our water sources are under occupation, and it's all controlled by the Israeli government and private Israeli corporations who allot Palestinians less water than the World Health Organization recommends. But why? What are they doing with all our water? Funneling it into neighboring illegal settlements, where Israelis have a continuous supply of water and consume more than double their Palestinian neighbors. And to top it off, the Israeli company that supplies Palestinians in Bethlehem and Hebron with 70% of our water is reducing that amount even more. I can't wash my तो सर ये सिचुएशन है जो वहाँ पे रेगुलर है। तो But now what
like जी, this जी। video, anybody can show. I can But show you. I think Can Mr. I? Jha should Can respond, I? then Yeah. I have But something to say. anybody Mr. can Jha, show the are other you side of there? the videos also. Like both sides are available. Like that's not a problem. I can show you the videos where No, no. like Palestinians have lots of water यार and इसी वजह से yeah. वो वीडियो का एक perception है. I understand what you're saying and correctly pointed out. Thank you very much. Rupesh Jha, do you have something to say? Otherwise, I would like to address a few things. Rupesh Jha. He's left. Okay. Nobody. No, I think Rupesh is not here, Shah. So you can go ahead. I think he left, and Yeah. No, I had to actually address a few things to him. It's okay. Carry on. I think it would be better if somebody come here, and he's back anyway. Yeah. Yeah, Rupesh is back. So, Shah, you wanted to say something to Rupesh. Yes, Shah, go I ahead. think Rupesh Jha should get a chance to respond. Then I would like to ask. Okay. Let me say, Medusa was telling me about that Jews and Muslims have been living together. So I want to point it that she should read the Pact of Umar, how non-Muslims were living here, and they were just paying toll tax or jizya and protection money that Mafia you pay. Those kinds of things were there, and they were living in ghettos, and so let that be bygone. But that was the thing. Now the problem is that area is actually semi-arid, and the Israelis have made it fertile, and they are doing so. The thing is that since 2006, Gaza is not occupied. It is under the control of Hamas, and they are controlling the internal matter of the Gaza Strip. So maybe at the checkpoints and other things, IDF is checking and doing that. Besides that, they are not doing. And since if you are creating trouble, and there are a lot of stabbing incidents which have come across, so when you do this kind of trouble, your screw has to be tightened a bit. So and why should Israelis are giving Gaza residents free electricity, free water? What are they getting in return? If you don't pay your bills, your electric supply and water supply will be gone within days. But they are giving them. And I tell you one thing: Gaza is not a slum, some Dharavi slum in Mumbai. It has tall buildings and everything. And they are not. They are being supported by a lot of money, and people have vested interest in keeping that situation. It is same issue that these people, and I have contacts with both. I have met from Israel as well as Palestine, and I have made my own judgment about them. So it is not that you are trying to play that Hamas is a victim, or they have in their charter that they want to throw Israel in sea. And if I check all the facts, I find more. They are more victims. Jews are more victims than sinners. So it is bad. And thank you very much for listening. No worries. Mr. Medusa, would you like to respond to him, or should I do it? No, I guess because it will turn into a debate about Judaism and Muslims. But he conveniently went back to the Umar's time and did not point out everything that happens between that. Like I was talking about Cordoba and how the Muslims and Jews have lived together in Europe. He conveniently ignored that. But yes, fine, I guess. Okay, fair enough. So, Rajesh Jha, I would like to point a few things out to you, which I have been patiently waiting for. Which you said. First of all, I can assure you, you don't happen to be the only person upon this panel who has visited Palestine or Israel, dependent upon what you would like to refer to it as, according to the half-cooked stories which you come across. Point number two, I do not deny for a second that Jews, due to their religious affiliation, even though they left, and there are a lot of theories in regards to the fact if Ashkenazi Jews
or the European Jews are even ethnically Jews or not. Let's just leave that for a perception for another day, because that would be an endless argument. But I thought I should bring that to your attention. I would like to also bring to your attention that if this was, and I'm going to keep it very short, I'm not going to indulge in the history. If this was only a Muslim stroke Jewish issue, or if it was theologically based, then what would you say to in regards to the fact that when the state of Israel came into existence from 1948 to 1967, the Palestinian Christians were removed from their areas. We're talking about tens and thousands of those people. If you go within Europe today, you see their children, they speak about this. This is not 500 or 1,000 people. These are tens and thousands of people of Christian origin, whose children, whose offspring happen to be Christian today. What was their issue? Why were they removed from that land? Do you realize that if there, and you were correct, there was a time in the Ottoman Empire, due to the fact that the relationships were much cordial between, I'm not denying that there were not always tensions, there always are tensions within communities, but they were not that bad. Jews were able to purchase land in that area. Why were they allowed to purchase land in that area? Was because they had a religious affiliation. And it was taught at that time that because they have a religious affiliation, they should have a right to come and visit. And some of them can purchase land. Nobody suggested to them that people who are residing in that area need to be completely removed from there, whether they are Christians or Muslims. And I would like to end my statement, and I would like your opinion by adding one thing. You very conveniently said that what Israel is doing is completely justified. In that case, when September 11th occurred in United States, and when 7/7 bombings occurred in London, all the British Muslims and the American Muslims should have been ethnically cleansed by the Americans and by the British. So this is not what you do. Because there is a terror attack, you do not go and kill innocent people. How many people out of those Palestinians are Hamas supporters? Does anyone have a survey? No. This is pretty convenient. As far as the Muslims are concerned, as far as the Palestinians are concerned, they are two separate units in these cases. This situation is nothing but a same kind of a similar situation as we had in South Africa. Israel happens to be an apartheid state. Yes, the apartheid state who has been carrying out a genocide of Christians as well as Muslims and anyone else who does not fit the description which is designated by them, right? Anyone who does not fulfill that criterion is basically not considered an equal citizen. Yes, that state suffered from a terrorist attack last week. But does that mean, Rupesh Jha, does that mean that you go and take that as an opportunity and almost like go on a rampage and decide to, what's the difference? So next time, if this is what is going to be the norm around the globe, so next time there is a terror attack, whatever ethnicity or religion that terrorist organization comes from, or that extreme manner of extremism is coming from, you're going to target the local community from that part. Is that what you're suggesting? Is that your solution? Please
Rupesh Jha, elaborate. I would like to hear what you have to say to these things. And if you want, I can go step by step with you throughout from the existence of the Balfour Agreement and how it was planned, with statements and names and dates, if you would like to. And we can clarify some of the other issues which you said. So visiting a place does not mean you know facts or you have figures. I think you have to go across your biases. Do you actually advocate the fact when you say that you agree with what Israel is doing? There are over 1 million people residing in that area you refer to as the Gaza Strip. Do you think they should be slaughtered? Do you believe they should be killed? And killing and genocide of those people because of a terror attack is justified? Rupesh Jha, please respond to that, if you may. I want to draw your attention. If you want to go into Muslim Jewish, so I want to tell you that in the area of Hejaz, which is your holy sites of Muslims there were a lot of Jews. There were a lot of Jews in Baghdad, and they were kicked out. And if they have any ill will towards the Christian community, then I don't fault them for that, because 2 million Jews were killed. By who, which community they killed. So why they will not have ill will towards Rupesh Jha, do you have any references, sir? Because I do. Yeah. Yeah, can you provide a reference for what you've just stated right now? यार देखो रुपेश भाई, आपको पता है कि क्रिश्चियंस और जूस के क्या मसले हैं एंड सिंस व्हेन है? आपको लगता है क्रिश्चियन और जूस के मसले सिंस नाजीज है? आपको ये लगता है? No. एक चीज मैं ऐड कर दूं। Furqan ji, just one second. जी, okay. Rupesh Jha, otherwise the conversation is going to get dragged. Rupesh Jha, were you aware that there are tens and thousands of Christian Palestinians who suffered the same fate as Palestinian Muslims? Are you aware of that, or should I provide Yes, you some I know people from Bethlehem. Okay, who, so I know. I'm not talking about people. I'm talking about entire towns and cities which were eliminated. Those people were removed from their homes. Their lands were taken. This is what? After 47 to 67, what was their sin? Okay, there was an issue according to you. This is a Muslim and Jewish issue. What did those Palestinian Christians do? Please respond to that, sir. I would like to know. If you go for all the wars that Israel has to face since its inception till the day when they always collaborated with the others, and which resulted in their losing. Okay, you can laugh, but Israel will still attack. I asked you a very precise question. Sir, do you know what does the Balfour Agreement state? Okay, let's begin from there. Yes, it was signed by. Go ahead, please elaborate, sir. So they had created a Jewish state, and for the others, Palestinian people, they have to Balfour Accord. It was signed, and there was some problem with them. I have to check for, but I have read it. It's not in my mind right now. I really apologize. If you have no idea what the Balfour Agreement is, then you have no idea on what grounds and on what reasons the state of Israel was conceived. Even what the argument of the Jews was. To qualify for this conversation, with all due respect, sir, what you're required to do is know, and especially if you're going to be quoting history, what was the agreement at that time? What was the conflict about, sir? So it was not basically anything to do with what you're stating. So Balfour Agreement was basically conducted by a gentleman called Arthur Balfour, who wrote a letter addressed to another gentleman called Lionel Walter Rothschild, who is a renowned Jewish figurehead of United Kingdom, right? And the letter
was not very long. It is for everyone to see. It's not even 100-word letter. You can, and do you know what the contents of that basically entailed? The contents of that is, and I am surprised that you love speaking about this subject. It's one of the shortest documents you're ever going to find in any geopolitical situation. And all what that talks about is agreement to create a Jewish homeland. And you know, at that time, they were not even sure, are they going to create and develop that in South of America, or they are going to do it in Africa, or they're going to do it in what is now known as the State of Israel or the Holy Land. So, sir, I think that was a very basic thing. So I would save you the embarrassment and I would ask you a more simplified question, which is more relevant to 2023. Do you believe, sir, when a terror attack takes place, as a result, the government who's facing that terror attack should basically go to their own citizens who they've been treating badly, and they very well know that they are not supporters or part and parcel of Hamas, the terrorist organization, and they should blatantly take their revenge by slaughtering them. If that is the case, sir, would you agree to the fact that United States should have done the same? They should have gone against Muslim citizens of America. Do you believe that United Kingdom after 7/7 bombings should have carried out the same thing? They should have gone against their own British Muslims? Because that's what you're condoning in terms of Israel, sir. Please respond to that. Let me first start by putting listen, don't just a moment. One housekeeping announcement. We are reaching almost half time. So one last comment, Rupesh, respond to what Shah said, and then we can move on with the discussion. We have certain other new panelists as well. Okay, go ahead. Okay, let me start by reading the letter which he is referring to, which I have. Okay, it goes like that. Foreign Office, November 2nd, 1917. Dear Lord Rothschild, I have much pleasure in conveying you on behalf of His Majesty's government the following declaration of sympathy with Jewish Zionists aspiration, which has been submitted to and approved by the cabinet. His Majesty's government view with favor the establishment in Palestine of national home for the Jewish people. So it was Palestine, not South America, and will use their endeavors to facilitate the achievement of this object. It being clearly understood that nothing shall be done which may prejudice the civil and religious rights of existing non-Jewish communities in Palestine or the rights and political status enjoyed by Jews in any other country. I should be grateful if you should bring this declaration in the knowledge of the Zionist Federation. So it's clear that what I had said, that they were planning to make a Jewish national home there. It is written. No, sir. Point number one. And now you state, when you, sir, very respectfully, when you state that Palestine, or many people state that Palestine, the name does not exist. In the Balfour Agreement, which was like more than 100 years ago, like you very well read from your own words, it states that. On top of that, it is a pledge in regards to that. And after that declaration, like I told you, I'm glad you finally read that letter, sir. I am humbled that you are going from this platform a bit more knowledgeable than you came. Then the next step I would like I said, we can go through the entire thing. Please go and check what were the committee room meetings after that. They were deciding where are they going to provide the homeland whenever it comes into existence. Is it going to be in Africa? Is it going to be in South America? Or is it going to be in Israel, what is known as Israel today, or what you might refer to as Palestine? Please come up. You don't pat yourself too much. Listen, this was the declaration, and this is the original letter which was written from, and it mentioned Palestine very clearly. Okay. I have not refuted the letter, sir. I'm the one who brought it to your attention, sir.
No, listen. Now about attacking, they are not attacking civilians. They are attacking Hamas. And you know, there is a famous saying that you have to break a few eggs if you want to make omelette. So if that happens, well, if they have chosen those governments, and then they will have to suffer the consequence. It always happens like that. It always has gone like that, and it will always go like that. This is real politics. So if they have supported and brought that government and that attacked terrorist group attacked the people, then they have to move it and do whatever they have to do. You know, there is a famous, seas of That's my. what I wanted to know. I wanted to know your opinion. So you think Israel is You know, justified? And there was if like for to kill one or a point something percent terrorists, you have to kill an entire nation. If you have to kill thousands of people, it's completely justified. That's your opinion, sir. Fine. Okay, Shine, Rupesh, Rupesh, last comment. I said it earlier because we have to move on with the discussion and go back to the current affairs, and we also have speakers. So, last comment, and then we move on with the discussion. Thank you. Yeah, I want to say that one thing, that if organization which is supposed to be the ruler of certain place attacks and there is a terrorist attack, then there is bound to be some reaction, and it might be anything. So I am not about a genocide or whatever, but it will come and it should come. It is justified, but not too much, but it will have to go, and that is the way how things work in this world. So that's, thank you very much. Thanks for listening. Thank you very Thank much, Rupesh, for your very, very candid, I should say candid description of what you think. You believe that a populace of an entire community is basically collateral damage. Thank you very much. Great job, Rupesh. And I think you should basically also actually there was a very good statement by Jay Shankar 2 days ago on the same subject, where India very clearly condemned what had happened to Israel and what Hamas, the terrorist organization, has conducted, but very rightfully stated, he pointed out, and that's the official stance of India as well as we happen to speak, that not only in terms of humanitarian aid for Palestine, India has not reduced but increased it. The stance of Indian state is unchanged with the Modi government, by the way. And on top of that, India believes in a two-state nation, a two-state solution when it comes to Israel. And that in itself is very clear. On top of that, if you look at the statement which Modi made, and very correctly, it's very, very limited. It's only on minute occasions that we agree with Modi, but he very rightfully pointed out that what happened to Israel is very wrong, but what Israel is about to do cannot be justified either, in his own words. So very interesting how governments behave and how geopolitical situations make them change their stance at times. So for Okay. I think we should move ahead with the discussion. But before that, we have another speaker. Madara, just give your comments. Make it brief. It would help us a lot with the timekeeping. Thank you. Yeah. Thank you very much. Look, like there is no India has been like, I come from India, so I really applaud my government since the beginning, since the independence, that they always supported Palestine. They always supported Palestine. Like they probably supported more Palestine than anything to do with Israel till the Soviet Union collapsed. After that, we get very close to Israel, and we have a very good relationship with them. But still, India still supports Palestinians and their well-being, whatever. We still support. India still supports in a very official level two-state policy. But what happened 3 days ago? It's very similar to what happened in Mumbai attack.
this is pure terrorism. And at least in Mumbai attack, we don't know who did it. It's not Pakistani army or a Pakistani government. It's like a few terrorists. But here we are very clear who did it. It was Hamas. Hamas actually represents Gaza. Of course, not everyone like Hamas, but it's their representative. So we have to be very clear about like where it actually comes from. So what I'm trying to say is, so Israel will go ham on Gaza Strip. Of course, they will probably not find any terrorist. They cannot pinpoint terrorists in this like a very small strip of land with a huge density. They will probably kill a lot of civilians. And I mean, that's why they are asking people to move away from this land. So, but when the people move away from this land, when everyone if they're the thing is, Israel will do what I think it will do. They want to get rid of Gaza Strip altogether. There will not be any more people there. So, maybe the people should leave if they want to survive. If they don't leave, it will bombard and kill all the people. It is there. I'm not saying it's the right solution, but I'm saying that this is what Israel will do. This is what I would do as an Israeli, if I was an Israeli. Yeah, thank you. That's my point. I guess that it's the right time if you have anything to showcase. कोई आपने Well, yes, of course. पहली तो मैं इसके ऊपर responsive comment ये करूँगा कि Sid, I basically shared a letter with you. If you would kindly share that on the screen, and I think that would shed some light in terms of why, and in terms of why there is so much support in terms of the United States for Israel in particular, especially in the last 20 odd years. This is an open letter from the evangelical Christians to I think not many people actually realize how much influence they carry. And the day that letter was made public, this was only about. Please, Sid, can you go through? Could you read yes, the yes, letter yes. for me? So Yes, like, evangelical statement in support of Israel. In the wake of the evil and indefensible atrocities now committed against the people of Israel by Hamas, we, the undersigned, equivocally condemn the violence against the vulnerable, fully support Israel's right and duty to defend itself against further attack, and urgently call all Christians to pray for the salvation and peace of the people of Israel and Palestine. While our theological perspective on Israel and church may vary, we are unified in calling attacks against Jewish people especially troubling, as they have been often targeted by their neighbors since God called them and his people in the days of Abraham in Genesis 12:1-3. Since the inception of modern state of Israel in 1948, Israel has faced numerous attacks, incursions, and violations of its national sovereignty. The Jewish people have long endured genocidal attempts to eradicate them and to destroy the Jewish state. The anti-Semitic deadly ideologies and terrorist actions must be opposed. Israel stands as a rare example of democracy in a region dominated by authoritarian regimes. The tragic event of October 7th further underscores the importance of democracy in our world and stand as a sober reminder that supporting Israel's right to exist is both urgent and needed. In keeping with Christian just war traditions, we also affirm the legitimacy of Israel's right to respond against those who have initiated these attacks, as Romans 13, this is a Bible verse, grants government the power to bear the sword against those who commit such evil acts against innocent life. Furthermore, we recognize the dignity and personhood of all persons living in the Middle East and affirm God's love for them as well as his offer of salvation through Jesus Christ to all people. We also recognize the difficulty ministry of Jewish and Palestinian believers who labor for the
gospel. We pray for their protection and for God's blessing on their gospel ministry. Finally, we call on American policymakers to use their power to take all forms of terrorism seriously and call government and civil authorities to confront evil work to prevent future attacks so that the innocent and vulnerable will be protected. May God bring peace to Middle East. This Now, is my the question is, my question is, this was a letter addressed to the Congress, directly to these people who have access to the President of the United States, and they happen to sit in the very heart of the decision-making mechanisms within Washington, D.C., within the White House. Now, the question is, if this is not religious extremism, I don't know what is. Yes, it's a religious matter. It's a religious matter not for local Palestinian Christians. It's not a religious matter for Muslims who happen to be local over there. It is a religious matter for evangelical Christians. It is a religious matter for some Jews who don't happen to belong to that land. And that is why they are so harsh to these people. It gives them orgasms in terms of it's not just Hamas who is basically conducting a religious warfare or terrorist attacks. This is dogma being used to run policies. Do you understand? So I thought we should highlight that aspect of this situation as well. If anyone else has something to add, please go ahead. I want to draw your attention to the fact that you are pointing towards everything, but not staying within the Muslim community. You know, the ones who were killing children and dragging dead bodies naked, they were shouting, Allahu Akbar. Just about that. Watch my words. Watch my words. Please listen carefully. Hamas is a terrorist organization. It's an extremist organization. They have done just as much good for Palestine as Al-Qaeda has done for global Muslim community. They have brought the Muslim community not just to shame, but the very people they are asking or claiming to protect, they have put them at the hands of butchers. They have provided those excuses so those children and those people can be executed. But having said that, if I'm saying that about my own extremist groups from a religion which I belong to, and I distance myself from them, I am not going to have absolutely no fear in pointing that out, that what's happening in United States is also religious extremism. The basis on which the state genocidal apartheid state of Israel has been conceived, and they do not even accept the Orthodox Jews in regards to that, is nothing but religious extremism, sir. Do you disagree with that? Shaji, actually, I would like to. You're not the only one who So, calls Saji, can I out the disagree rat. with you? Yes, carry on. Look, I was in Israel. I was in Tel Aviv. I was in Haifa, and I was in Jerusalem. And I met a lot of Arab people who were in Haifa. That was some kind of salsa Halloween party. They were all dressed up. They were partying. When the guy in the end dropped me back in the train station in Haifa, he was more afraid of Muslims than Jewish people. So it really tells you like when you say apartheid, it's not apartheid actually. South Africa is not the same as Israel. Maybe there are some discrimination, but it's definitely not apartheid.
18% of Israelis are Arab Israelis, and they have the same rights as Israelis. And you are calling them apartheid, and they fear Palestinians. He's saying is right. The Muslims are scared of Muslims more than anybody else. So yeah, that's my comment, and you try to think over it why that is so. Thank you, sir. Sir, I would like to show you a No, little I bit of actually did not what's going understand what on you over just there. said. Can you repeat yourself, and maybe this time round you can be a bit more clear in regards to what the point exactly is which you're trying to make? Rupesh, can you please clarify yourself? Can you elaborate a bit, please? Go ahead. I was pointing out that there are Arab who happen to be Muslims who are citizens of Israel, and they are as much they want to keep away from your Palestinian Muslim brothers and Christian brothers. I have seen with my own eyes. They are living peacefully and they have voting right. They have their members in Knesset. So Rupesh, is there if this thing apartheid is just bunkum. I say just Rupesh, something because okay, whatever. respectfully, sir, I agree with you. They happen to be 18%. What are you going to do with the other 82% of the population? Slaughter them? They are not citizens of Israel. They are Palestinians, and these 18% are Oh, they're Arab Palestinians citizens because of. they do not acknowledge the state of Israel. So they happen to believe in the two-state solution. That is why you don't consider them to be Israelis. Actually, What Shaji, kind I of would like to show. marker do you have, Rupesh? No, Shaji, Would you please like in to the case of elaborate? apartheid state, and why do we call it the apartheid state? I would like to again show you a little bit of a video. Now, the people in this video are not actually Israeli military. These are the Israeli civilians. See how they treat the other Muslim civilians in Israel. Quite lovely. انت جاي تمد ايدك ما إلك. هاي الشرطه جايه هيك بتشوف هلا بتشوف ايش خلص فيك احكي شو بدك قاعد بيسوي مشاكل قاعد بيستغش فينا بقعد في سيارتنا انزل من السياره لان هذا مش مالك قال قاعدين بخوفوا فينا بالسلاح قاعدين بخوفوا فينا سيارته هاي سيارته هذه انت ما إلك اسمع ما إلك تشغل السياره انت داخل بارضنا انت جاي تسوي مشاكل احنا ما جينا هون ارضنا اشتريناها لا مالنا يا حبيبي ارضنا اشتريناها مالنا حقنا دفعناه ما تلعب في السياره هاي انا بصور فيها ايوه انت هدول اوراق خاصه فينا ما إلك فيهم انت جدك علي انت جدك علي ايوه تعال زي هنا بدي شيء ده ما غلطنا Isn't this just lovely? These are not, by the way, any paramilitary forces or any IDF members. These are Israeli civilians, armed, quite well armed with AR-15s, and just lovely how they are treating people who just want to, go to their home in their car. I believe none of you would let me touch your car, and these people have to live through this. This was just one video. It was one incident that was on a video. Majority of these incidences don't end up on videos. Majority of these incidences end up. End of the day, Sid, these kind of videos you can see from both sides, both ends. Yeah, but on the other end, the people are on the other end. You can find a random lady walking. You can find a videos random lady walking around the street and stabbing people. Oh, you mean the random lady who is confirmed to be a Muslim somehow? I don't know, but there are some videos which they shown like people just just. I mean, would you let me touch your car like this? Would you let me spit on your? Let's suppose that. Look, I kind of agree with what Karan is saying because these incidents can be isolated. Yeah. But Karan, my question to you would be,
that for example, even if we consider these cases to be isolated and we say that Muslims also carry these out, and I would rightfully agree that minorities of all communities happen to have extremism within them, but when it comes to the state, right? And this is what's the most important part. When it comes to the state, if the state is otherizing, the state is basically penalizing, the state is not giving the right to vote, wouldn't you consider that state to be unjust and an apartheid state, especially a state Yes, whose I agree. majority of citizens Yeah, have आपने पूछ लिया recently ना, come मैं I back understand. due to theological reasons, not even 100 years. देखिए शादी, देखिए वो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है ना, ये जो गाजा स्ट्रिप है या they have independent, like they have their voting system also, they can vote, and obviously they're surviving for somehow somebody's supporting them. I think there's about 2 million people living there around, if I'm not wrong. गलत अगर मैं नहीं हूँ, 2 million लोग वहाँ पे रहते हैं, 20 लाख ये दो कितने रहते हैं यार, I don't know exactly. जी मेरा ख्याल है लेट्स नॉट गो इनटू नंबर्स, आप कौन कंटिन्यू करें। हाँ, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वहाँ पे 2 मिलियन लोग रह रहे हैं, and if you look at them, like they have a decent house, all kind of facilities they have, like even the cars, you can see random cars are there, and almost everybody have a iPhone, sorry, a digital phone, and they look like they eating properly and proper fed and everything, and somebody is supporting them for this life. I don't think so they can generate such a revenue from such a small land, and on the top they're fighting with the Israelis and everything. So it's not just all gray and black, white and black. There is like gray area also there. So they're surviving. अगर आपकी पूरी बात मान भी ली जाए, अगर इतना ही बुरा हाल है तो वो तो उनको सर्वाइव ही ना करने दें. How they managed to build this proper houses, buildings, road structures, cars, and like किसी भी आप हालात देख लो, they all look like proper fed, and खाना पीना, schools, everything is there, even hospitals are there. So somehow even they have access to the sea, like anybody can supply them stuff straight away. So it's not just a landlocked, it's they have access to sea. तो इतना भी नहीं है, somebody like so they तो करण भाई जी मुझे एक बात बताएं, आज आपके अपने कंट्री के अंदर, लंदन के हार्ट के अंदर, there were tens and thousands of people out there protesting, right? They were talking about those things, and they've been doing that for years and years, and majority of them do not even happen to be Muslims. अगर पूरी दुनिया के अंदर कोई मसला ही नहीं है, ह्यूमन राइट्स की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इतने अरसे से क्यों बोल रही हैं, जो क्रिश्चियन पैलेस्टीनियंस हैं वो आपके ही कंट्री में रह रहे हैं ना, they're living in our country, they're living in the UK. Haven't you come across those communities? वो सब झूठ बोल रहे हैं. आज जेरेमी कोबिन का इतना बड़ा स्पीच था उसके बारे में, अभी तक देखो शादी, इट्स रिकॉर्डेड, मैंने अभी तक कुछ ऐसा नहीं कहा कि कोई झूठ बोल रहा है. I haven't said it. नहीं मुझे पता है, मैं ये कह भी नहीं रहा करण भाई, आपने ये कहा है. I know I haven't said it कि anybody's lying. That's why I'm addressing that question. हाँ, absolutely sir. शादी जो आप कह रहे हैं, ब्रिटेन में, हमारे यहाँ लंदन में आज हुआ है, तो all walk of life people, हर तरीके के बैकग्राउंड से लोग वहाँ पे जुड़े हैं उनके साथ. तो उनकी तो डिमांड ये है ना कि like should stop this kind of wars, like जहाँ पे जैसे मैंने पहले ही शुरुआत में कहा कि जहाँ पे इनोसेंट लोग मरते हो तो कोई भी खड़ा होके कहेगा कि यार इसको बंद करो. Like it's ये तो कुछ नहीं है. फॉर इराक वॉर के लिए यहाँ पे 10 लाख लोग सड़क पे आ गए थे. इराक में जो वॉर हुआ था उसके लिए भी लोग आगे थे बाहर. तो जस्टफुली आए थे ना करण भाई. आप चलें, गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, बट मार्गरेट हॉज, बहुत सारे लोग थे जो आज दूसरी तरफ को जा रहे हैं. लाइक एविडेंटली मार्गरेट हॉज का जो इस पूरे चक्कर के अंदर इजराइल और गाजा कॉन्फ्लिक्ट में जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो इजराइल की फेवर के अंदर आ रहे हैं. लेकिन अब यहाँ पे क्वेश्चन तो यहाँ पे मैं आपसे भी यही करना चाहूंगा करण भाई, आप मुझे एक बात बताइए, मेरा आपसे एक सवाल है. एक ऑर्गेनाइजेशन जाके टेरर अटैक करती,
Yes. इसका मतलब है आप कम्युनिटी को अटैक करेंगे रिटेलिएट करते हुए। तो इस तरह No. तो फिर इसका मतलब है 7/7 बॉम्बिंग्स एथनिकली देसियों ने की, एथनिकली और सर, रिलीजियसली मुसलमान देखिए ओरिजिन के आप लोगों ने यहाँ पे की। देखिए तो आप ब्रिटेन यहाँ को पे क्या करना चाहिए था नहीं कि देखिए जितने भी ब्रिटिश एशियंस और मुस्लिम रहते हैं उन सबको वो जाके उनकी कम्युनिटीज को उड़ा देना चाहिए। आपने अगर पूछ लिया तो लेट मी आंसर बैक। आप बोले मैं आपकी बात समझ गया हूँ। आप यहाँ पे ना दो चीजें मिक्स कर रहे हैं। एक बात ये है कि जो लंदन में हुआ ना वो यहाँ के सिटीजन ने किया, और जो इजराइल में हुआ ना टेक्निकली दिस गाजा पीपल आर नॉट सिटीजन ऑफ दैट लैंड। तो वहां पे वो घुस के उन्होंने जो किया काम, सो दे क्लास एज अ लेकिन डिफरेंट आप तो कंट्री। अभी कह रहे थे तरन भाई इसी कॉन्वर्सेशन से पहले देखिए ना यही तो स्टेलमेट आ गया। आप तो कह रहे थे कि वो उनको बड़ा अच्छा ट्रीट करते हैं, वो उनकी कंट्री का। मेरा तो आर्ग्यूमेंट मैंने तो ये नहीं है कहा कि कि अच्छे ट्रीट इजराइल कर इज रहे हैं। मैंने ऐसे स्टेट। नहीं कहा। मैंने ये कहा कि लेकिन दे करण भाई somehow करण भाई एक मेरे एक मेरे आर्गुमेंट मैं यार उठाऊंगा। एक मिनट यार, जी let चले me चले give you प्लीज my प्लीज stand। गो आप अहेड। बोल लेना यार, मैं सुन ही रहा था। मैं ये कह रहा हूँ कि द पीपल दोज आर लिविंग दिस गाजा जो स्ट्राइप या जो भी आप कह ले पट्टी में, उनको कोई ना कोई सपोर्ट कर रहा है। दे हैविंग like somehow support, any even even country like France, like even European Union used to support them for living, right? तो ब्रिटेन भी करता था। तो इवन मुस्लिम कंट्रीज डू आल्सो, like ईरान करता है उनको सपोर्ट। चलो ठीक है, मैं उसमें मैं ये मेरे कहने का ये मतलब था कि दे आर सेल्फ मैनेज्ड। Can I ask a question, Karan? It's very similar to what you're saying right now. I want to make a point. See, so Gaza Strip is is self-governing territory. So Hamas is not just a terrorist organization; it is the governing body or the government of that particular land. So if the government of the one land sends to, it's technically a war. Okay, and everything is fair in love and war. It is Gaza So is not I occupied. would interject I would interject शाजी शाजी नहीं इस पे एक चीज मैं कहूंगा यार आप एक सेकंड ये आई एम गोइंग टू कीप इट वेरी शॉर्ट, आई स्वेयर टू गॉड। ठीक है, मुझे रुपेश झा आप मुझे ये रेफरेंस दें कि हमास इज द गवर्नमेंट ऑफ यस गाजा स्ट्रिप प्लीज। दिस इज नहीं रेफरेंस इन्हें मिलेगा नहीं। ए बी दूसरी नहीं उन्हें चीज निकालने देना। नहीं शाजी एक सेकंड शाजी he's outrightly claimed over here, this is how informed Mr. Jha is, Balfour Agreement, let me remind our viewers, मुझे इनको बताना पड़ा, फिर इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, I appreciate that he read it. Now I would like to point out that he's made another very very enlightening claim. Please, it's not a blunder। रुपेश झा साहब आप मुझे रेफरेंस दें कि हमास जो है वो गाजा स्ट्रिप के अंदर उनकी गवर्नमेंट, प्लीज। It's not a blunder। it's आप अपना narrative बना रहे हैं which is very wrong factually and that's not actually correct। आप जाके चेक करें। गूगल सर्च दूर है ना। रुपेश झा 2023 के यार अंदर एक सेकंड हमास जो शाजी, आपके I want to अकॉर्डिंगली ask you गवर्नमेंट a है, question. आप मुझे उसका रेफरेंस दें। Rupesh, by saying that Hamas is the official government in Palestine, are you justifying the murder of Palestinian civilian? Are you saying it is war, so it's fine to kill them? Is that what you're saying? Answer me yes or no. Yeah, answer that. If Yes. Listen. You want an answer? I tell you. See, in every country, if there is a war, the two sides fight. So why isn't your Hamas coming and saving its civilians? If that is happening, it does happen. It is reality. पहले It is political reality. That is पहले आप ये that Hamas is basically our organization. I have clarified that on various occasions before. Hamas is a terrorist organization which we do not support, we condemn। और आप मुझसे हमारा कह रहे हैं आपकी होगी, आप अल-कायदा के सपोर्टर होंगे, मैं क्या करूं फिर? अगर इस तरह बात करनी है आपने तो मेरे से भी आप कर लें। आप हमें टेररिस्ट सपोर्टर कह रहे हैं। उसके अलावा
can you guys let me answer? He asked me, so Gigi, I should answer. please go ahead. Please go ahead. Please go ahead. First of all, to, 8 seconds. First of all, to answer my question that if it's war, do civilian has to die? Are you justifying the civilian? Which you didn't answer. Okay, so answer again. Okay, and secondly, by you saying ke are Hamas, are you saying that we're supporting Hamas or Hamas belongs to the Pakistani or all the Muslims are responsible for Hamas? What is your point of view? Why are you saying are Hamas? Why didn't you just say Hamas? Because I find that certain sections, certain religious groups are, they just talk about, when anything bad happens to their group, it's very bad. But when they do it, it's not only about this incident. I have seen incident after incident after incident. तुमसे explanation मांगी नहीं है ना, मैंने तो yes or no में जवाब मांगा है कि आप जो कह रहे हो कि Hamas is the official government of do all Palestinians deserve to die? Do they need to be killed? All the women, all the kids, all the elders, do they all deserve to be killed by an Israeli white phosphorus bomb? Are you saying that? Answer yes or no. My answer is all Hamas people deserve to die. That's the fine. All Hamas, and who are all Hamas people? And 1 second, who are all Hamas people? Who belong to that group, they deserve to die. Those who belong to that organization and who are associated with them, they all need to be executed. I am saying in absolute black and white. I agree with that. I agree with Hamas, so technically you consider us Hamas as well. So technically you're saying we need to die as well? I am not saying you must die, but those who had planned, executed, and taken them hostage, and their supporters. You cannot say such things. Fine by me. I'm Bajrang Dal, so what? I know where I stand. I don't. Good for you, you're Bajrang Dal. We're not Hamas. Stop saying we're Hamas. Stop trying to portray the whole Muslim community for one. Actually, I'm not done yet, man. I'm not done yet. Ek banda baat kar raha hai na. If we're not, we live in Pakistan, which is in subcontinent. Hamas, Israel, Palestine, it's a very Arab issue, to be honest. I'm pretty sure not one Hamas is a Pakistani. That's not even the point. Okay, we're all Muslims. Are you saying that all those billion of Muslims are part of Hamas, so we all need to die? Are you suggesting Muslims need to be genocided? All of the Muslims. Are you suggesting that? I am not saying that all should be killed, but all those who are associated with them and who are their they should be killed. I am not saying even sympathizers should not be killed. They should be condemned, which I will condemn. Those with the ideology who say Jews should be killed. Any ideology who say that particular group of people should be killed, subdued. I despise that ideology. भाभी एक पॉइंट आपने पॉइंट आपने अभी कहा कि all those should be killed and then you're saying कि जो वो कह रहे हैं to be killed it's like I don't know what you're saying क्योंकि आप एक जगह कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि मारो and then you're saying उनको मारो like it doesn't make any sense to me. Sir, if you are not listening properly, that's I am saying that all those people who are if you are not letting yes, please go ahead. Only one person at a time. Okay, one person at a time. Thank you. Now Medusa will speak. Now Medusa will speak, and then Jha will respond, and then Medusa can leave him again, and then. Please, guys, do not interfere. Let me speak to Jha. Nobody. रुपेश आप जवाब कहते हो कि ना कि जो आइडियोलॉजी जू को सपोर्ट करती है सो इन द स्टार्ट ऑफ द रूम यू वर गोइंग अबाउट समथिंग लाइक ऑल द मुस्लिम हेट जूस ऑल द मुस्लिम ट्रीट जूस बैडली सो टेक्निकली आर यू सेइंग दैट ऑल द मुस्लिम्स आर जू हेटर्स please make it very clear to me that who do you mean by Hamas and Jews hating ideology? Please explain this to me.
there are certain people whose religious scripture says to not be friend to certain group of people, and you are very well aware of all those You people. are So you I'm are talking about talking those about people. non-Muslims. Yes, I am topping ice. Yes, So you're saying 100%. all Muslims needs to be genocided? Not all, but who take up No, arms you just said that. You they just should said be that. dealt with heavy hand. They should be dealt with very heavy hand. Yeah, I'm saying that. Right. So I no, accept no, no. You 100%. just said, you just changed your statement. See, this is a recorded room. No, I This is a didn't. recording. I You never. just said I'm always that very all clear. Muslims needs to be All killed. Muslims. That's what you said. What? Yeah, you Rupesh, my brother, let me just tell you one thing. The No, Jews no, do no. not I'm nobody's consider you brother. their I am brother. only The brother to them. Jews the Jews do not, they consider us their somewhat cousin religion. They do not consider you anything. So don't be in that mindset where you think that, oh, you're so close to Jews because you find some conspiracy of religious relationship with them. That is not true. Yeah, those are conspiracies. So for you to come at us, and secondly, एक second. Secondly, when you say that Muslims are against Jews, for your kind information, you guys didn't even knew Jews existed. Jews were living peacefully with Muslims, right? Go and check. When you say about Umar's Accord, Umar's treaty, it was never really even. In fact, the time that they were killed out, the exodus of Jews happened in the 1970s. Okay, that is after Israel was made. Till then, there were like millions of Jews living in the Arab world, millions of Jews living in all the Muslim spaces. So where you get your information from, it's very clear. But for you to come off as some supporters of Jews because, oh my God, just say it quiet. You just say it out loud. You want Muslims to be genocided. You hate Muslims, and that's about it. And you will support anything against them. Just say it like that. Why are you hiding? Actually, Medusa, the thing is, एक second, even sir. the Jews I do think not Mr. support John needs to Israel like respond that. to what No, has been just a said. second, Shaji. I need to show that you don't have to be even a Jew to understand that what the apartheid state of Israel is doing is wrong. These are Jews. These are Jews with consciousness. And this is what they have to say. Mr. Jha, do you have something to respond after this? We don't hate Jews. We hate the Zionists. And what you guys are doing is not easy, so I appreciate it. Thank Now, until and unless the Jews that you were seeing over there were actually MI6 I think agents, एक चीज ऐड कर दूं, this video is not like current. This is probably from 2014, or this distinction between like Jews and Zionists that was very clear in 2014 जब पिछली बार इस तरह की सिचुएशन इस रीजन में हुई थी. तो आई गेस ये जितने भी लोग हैं इनको पता है, दे हैव सीन media and all. Or Rupesh, I think what Medusa said made a lot of sense, and that was very honest. And एक second, you can respond. आपको बोलने का अभी पूरा हमने मौका दिया है और अभी भी देंगे. Like what Medusa said, that made a lot of sense. I smell some Islamophobia coming out of you. ठीक है. A, B, आपका जो एक सेकंड शाहजी, एक सेकंड मैं ये क्लियर लेबल दूंगा. और दूसरा, लाइक आई थिंक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पे आप घुस रहे हैं उसमें यू आर बीइंग फैक्चुअली इनकरेक्ट, और कन्वीनियंस लेके अपना जो आपका माइंडसेट है
जो आप what you believe in उसको आप support करने के लिए you're bringing in facts और actual facts आप नहीं आ रहे, ठीक है, तो you are being intellectually dishonest. ना रुपेश साहब, आप ऐसा करें, जी, please go ahead. open the mic and please respond. A lot have been said and we like to be fair on the panel. And while you're at it, please explain that you were basically also suggesting that there is a certain group of scriptures जो इस तरह करते हैं. वो कौन सा ग्रुप है अगर आप सारे मुसलमानों की बात करें जिसको आप रेफर कर रहे थे, प्लीज वो किसके स्क्रिप्चर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे थे? बोलें रुपेश जी, the stage is yours. Yeah, the stage is mine. So it is Quran, and I find lot of problem. I live in Europe. I have seen with my own eyes what I have experienced, their behavior and their talking. If you go outside anything and listen to their sermons, you feel these people are trying, and they are actively trying to do. They are getting fed up on the European social security system. They are providing nothing, and they are just trying to do all crimes are done by this same group of people here, and so people are fed up here. And you go and kill somebody's in music festival, and it hurts. I'm a human. I see certain group of people killing certain other group of people. Because it is not even the matter of Israel. All across the world, this is happening. What should I feel? What is should be my reaction? And you're saying no, not happening, not happening. Everything is happening. And a very particular community, this one is creating problem, and I am very frank about that. I don't want to be politically correct in any matter. I say what I see. That's and I am not factually incorrect. You have certain, I can accuse you for the same thing. That is what I am saying. This is happening, and everybody is seeing. And they are, okay, thank you. एक second. So Rupesh, can I ask you a question? So you said, according to you, that ideology is the Quran, and it's the Quran which does it. So when Medusa asked you, are you referring to all Muslims? Is Quran followed by some other group? Can you enlighten me? I don't know who follows. I have seen many pork-eating Muslims as well in my life. So that is not a thing. Who follows or who, but it is in the book. That's true, and that motivates a lot of people. As far as I have seen. Whose scripture is this? Like Quran? And we have seen a lot of. And Shaji, one comment. We have seen a lot of Hindus eating beef. आगे बोले. Yeah, that is not a problem. I individual people, whoever eats whatever, not my problem. I just wanted to point out. Why are you bringing it as an argument? Don't bring it as an argument, Nathan. No, I am saying that not many people follow the prescribed things of the religion, so that is not a problem. Who follows or who doesn't follow, but it is in that book, and it motivates you to this kind of thing. I just don't understand how people can be thus hateful. And killing of kids and all those, and they are rejoicing and dancing on the streets, which I have seen with my own eyes. And how will I have a good impression about it? So tell me, if I have seen, should I trust your words, or should I believe with eyes? Rupesh, Rupesh, should I bring about the videos of the Israeli ministers please. In regards to their comments? Can you please be quiet for a second, please? Thank you. Everyone, I don't want to speak out of anyone. Thank you. Okay. So, Rupesh, can you unmute yourself, sir? Can you unmute yourself? He's unmute. He's unmute. Yeah, Shaji. So Rupesh, I'm going to have a cordial conversation with you. It won't last more than 2 minutes. I want to wrap up what you basically suggested, and I want to be fair by you not being silenced while you're saying it. So the first thing, when Medusa asked you, or other panelists asked you, I'm going back to that same question. Are you suggesting that all Muslims are Hamas and all Muslims are supposed to be? You were shy in terms of stating that you're referring to Muslims, but then you mentioned scriptures. After you mentioned those scriptures, you clearly said
the scriptures, when it was asked of you to elaborate, you said the scriptures you were referring to was the Quran. So my question to you is, who follows the Quran? Muslims should. Okay. So you believe that what Hamas did is basically exactly what the Quran states? Yeah, it is exactly what the Sahaba of Khyber war, which I have already studied, that is the same thing that they did. So this is what you believe. So basically, your opinion of Islam and your understanding of Islam is exactly the same as what a terrorist's opinion of Islam is. So I think you're speaking to the wrong people. You should be speaking to them. You have a lot in common in terms of agreement and how you perceive things. Let Sir, me tell you, I would like to remind you, sir, one more thing, and I would like to point that out to the listeners, whoever is listening as well. From the time this conversation began, from the time this stream was conducted, we have time and again started by stating that Hamas is a terrorist organization. The children and the innocent civilians which Hamas killed cannot be condoned in any way. We condemn what has occurred on behest of Hamas, but to state or for a state like Israel to go and slaughter innocent people in the same way, in the same light, is no different. So what in my opinion, this is my opinion, and if you can't see it, it's unfortunate reality that we have extremists who adhere to Hamas, and we have extremists who adhere to the philosophy of thinking that all Muslims should be slaughtered and they should be eliminated. They're all part and parcel of Hamas. So, in my opinion, sir, I would not view you any different from a Hamas supporter, or a sympathizer, because that person is hating against anyone who doesn't believe in their ideology, somebody who's a Hamas supporter or an Al Qaeda supporter. But on the other hand, sir, you happen to be hating another group of people and you want them eliminated, all those people who happen to follow the Quran. On top of that, you fail to realize that 1/3 of the globe's populace happens to be from that religion. So you are basically calling for a genocide in your ignorance, I hope, of 1/3 of the globe's populace. And I rest my case. Thank you very much for your time. Let me point out let me make this point clear, and I tell you, I think that conversation has ended. We appreciate your opinion. Thank you very much for your opinion. Thank you very much. Sajid, can I make a point? We would like to welcome you to our future conversations as well, and feel free. If that's how you feel, that's how you feel. But I'm sorry, you'll be viewed on this panel and elsewhere just as a Hamas supporter would be viewed. Shari, how do you know they are innocent? सभी को नमस्ते. Yeah, okay. We have GKM, and then we have Eastville. So GKM, go ahead, and then we would go to Eastville. Thank you. जी, सभी लोगों को नमस्ते. मैं जीकेएम बोल रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज मैं भी थोड़ी इंग्लिश बोल लूँ. तो इंग्लिश चलेगा क्या? इंग्लिश और हिंदी ऐसे? आप हिंदी बोले, इंग्लिश बोले, दोनों जो अच्छा लगे बोल लें. यार अगर आपको कोई और लैंग्वेज भी आती है ना, आप उसमें भी बात कर ले, हम ट्रांसलेट कर लेंगे. अच्छा, ठीक है, कोशिश करेंगे अगली बार. अब तो आना जाना आप लोगों से मिलना होता ही है, तो अगली बार मैं जब आऊँगा तो मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इंग्लिश में बात करूँ. फर्स्ट तो जितना कन्वर्सेशन मैंने सुना है और जो समझा है उससे यही
लग रहा है कि बात हमास और इजराइल पे हो रही है। और जो रूपेश जी ने अभी एक बात कही है, हेलो, जी जी आपकी हाँ, आवाज आ रही है, बताएं। रूपेश जी ने अभी जो एक बात कही है कि हिंदी में इन्होंने कहा कि हिंदी या इंग्लिश में शायद बोला कि हमास इज गवर्नमेंट बॉडी ऑफ गाजा। तो और फिर बाद में ये पता नहीं क्या क्या बोलने लगे कि हमास के लोगों को मार देना चाहिए, उन्हें जो है सपोर्टर्स को जो है डिसमेंटल टाइप का ऐसा कुछ कर देना चाहिए। फिर इन्होंने कहा कि एवरीथिंग फेयर इज गेम, एवरीथिंग फेयर इज इन लव एंड वार। तो सबसे पहले मैं ये कहूँ कि हमास एक रेडिकल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, क्योंकि जो गवर्नमेंट बॉडी है वो चुनाव जीतने के बाद या चुनाव लड़ने के दौरान हथियारों का प्रदर्शन उस तरीके से नहीं करती जिस तरीके से हमास करता है। अपने बच्चों को अपने कंधों पर लेकर उनके हाथों में गन्स देके वहाँ है, वो हमास करता है। और ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या पॉलिटिकल पार्टी ये काम नहीं करती इन डेमोक्रेटिक एरा। जी, और दूसरी बात मैं ये कहूँ कि इन्होंने कहा कि गवर्नमेंट बॉडी है, तो 2005 में इजराइल और शायद फलस्तीन का या फिर कोई संधि हुई थी, जिसमें इजराइल ने अपने सारे पुलिस चौकियां, सारे नागरिक गाजा पट्टी से हटा लिया और वहाँ चुनाव हुए और पीएलओ जो शायद यासर अराफात की पार्टी थी उसको हमास ने हरा दिया 2006 में। लेकिन 2006 के बाद जब से हमास उधर सत्ता में आई है तब से कोई चुनाव नहीं हुआ है, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि वो एक गवर्नमेंट बॉडी है? जी रुपेश जी। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं कि अगर वो कुछ भी है और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है या नहीं है, वो है तो है तो इसका क्या मतलब हुआ? इलेक्टेड है, इलेक्शन government body of that it is in control of that area, that's full and it has been absolutely established, so you don't go. So what you will say, the Taliban is not a government established, not absolutely established. You have to establish that. First establish that. It had won the election against Fatah faction, so technically it is in control of Gaza, and you cannot say it is not. It is the government of that Gaza Strip. It is whatever you call itself, government body, whatever it is. That's what you have to establish. Gaza Strip में जो government है वो हमास की है. That is what you said. ठीक है. अब वो आप establish करें नहीं कर सकते तो दाएं बाएं ना घूमे. आप कैसे कह सकते हैं कि established है? How can you say that that government is established? It had won the elections, and since it is in power, didn't it win the election? No. Who won the elections? एक second, Rupesh, एक second. Please, there was election in 2006. Relax करके आप बताएं किसने इलेक्शन जीते? आप अपना पॉइंट बना दें, उसके बाद I think GKM needs to speak to Rupesh and then we're going to go for final comments of everyone. And East Wind के पास हमने जाना है, आप अपना comment बनाएं. But I think GKM deserves the platform to question a few things. Yeah, I agree. I totally agree, Shaji. And East is here as well. मेरा यही comment है, like I agree with GKM. Like you have to establish के जो आपने claim किया है इधर कि हमास की government है जो कि basically इस सारी चीज के behind है और वो गाजा स्ट्रिप पे इलेक्शन जीत के एज अ डेमोक्रेटिक पार्टी आए हैं. ठीक है.
आपने ये कहा है, you have to establish that. That's my whole point. और वो आपने कहा है तो you have to establish that. बोले I want to tell you that it had won the elections, and there was a war between Fatah faction and Hamas. So whatever it was, it is in power and now you are going from the basic point. It is in the power in Gaza or not? Just tell me yes or no. Simple. What is the governing body of Gaza? it's not Hamas. Hamas. It's Who not is Hamas. it? Then who is? It's not Hamas. Then who is? There must be somebody. Then give me an alternative. It is Hamas. No. Then Go who? ahead. Go ahead with Then the who? discussion, but it's not Hamas. आप बताएं. Then आप who? बताएं. Just give me the then who? It's not Hamas. It's Then who is? आप जाके पहले हमास को स्टडी करें कि हमास है क्या. ठीक है. Furqan bhai, then you have to establish then who is governing the Hamas then, Gaza Strip then. Why don't you establish this now? विकिपीडिया का आर्टिकल लगा दें. जी Ever और since 2019 अगली बात मैं बोलना चाहूँगा नहीं, ever since 2019 Mahmoud Abbas is the president of Palestine. नहीं एक सेकंड. आप रुपेश म्यूट कर ले when you're not speaking ना, वो एको आती है. अच्छा, लाइक एक चीज है कि इलेक्शंस जीत के आप इस्टेब्लिश करें कि वो पार्टी आई है और वो बेसिकली गवर्न कर रही है गाजा स्ट्रिप को, उसके डिसीजन मेकिंग को, और उधर के लोग उसको सपोर्ट करते हैं. अभी आज हम एक डिस्कशन कर रहे थे, उसमें वॉशिंगटन इंस्टीट्यूट का एक पोल है, आप सर्च कर लीजिएगा ऑनलाइन कि कितने पैलेस्टीनियंस सपोर्ट हमास. आप उसको जाके स्टडी 67 कर ले. है फुरकान भाई, उसके अंदर 67%. ठीक है. हाँ जी. 500 लोग उन्होंने तकरीबन इंटरव्यू किए हैं. तो लाइक नॉट मैनी, और उनकी जो एजेंडा है उससे वो एग्री नहीं करते. ये 67% एक क्वेश्चन का आप बता रहे हैं परसेंटेज, जो एक क्वेश्चन था सर्वे का, और वो क्वेश्चन भी आप जाके पढ़ लीजिएगा कौन सा क्वेश्चन था. उसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस थे कि क्या करना चाहिए, ठीक है, सीज फायर तोड़नी चाहिए, नहीं तोड़नी चाहिए, ऑफेंस पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, ऑफेंसिव मोड पे, उस पे मेजॉरिटी वर लाइक नहीं तोड़नी चाहिए. 67 जो आप कह रहे हैं, दैट वाज वन क्वेश्चन. उसके बाद बहुत और क्वेश्चंस थे उस सर्वे में. 500 पीपल वर ऑलमोस्ट लाइक पार्टिसिपेटेड इन द सर्वे. तो कहने का मकसद ये है कि आप इस्टेब्लिश करें पहले जो आपका क्लेम है, फिर आगे की बात चलेगी. ये नहीं होता कि आप क्लेम करें और उसके बाद कहें कि भाई आप बताओ कि कौन कर रहा है. पहले आपने जो क्लेम किया उसको इस्टेब्लिश करें, मेक इट ऑथेंटिक. Listen, Ismail Haniyeh was leading the Hamas administration in Gaza, and it was he, and he belongs to Hamas. And if you want to, अब आप मुझे notarized copy कराने के लिए भेजने चाहते हैं तो फिर that is not the thing. And what you know, everybody knows that Hamas controls Gaza Strip, and then you are. आपने अपनी बात का जवाब दे दिया. Congratulations. आपका सेंटेंस बड़ा इंटरेस्टिंग था. आपने कहा it was he who was running past tense के अंदर. Thank you very much. Claps. You're an amazing person. आपने बेलफोर एग्रीमेंट पढ़ी, आपने उसको रिएटरेट किया और सबको इनलाइटन कर दिया. अभी भी आप स्टेटस देख लें उस गवर्नमेंट का क्या है. That was just the last elections. So listen. I want to tell you who. See, I want to tell you if it is by power or by democracy, it is there. रुपेश, can you just hold on for a second? आप पता है किन बातों के ऊपर आर्ग्यू कर रहे हैं? आप उन बातों पे आर्ग्यू कर रहे हैं जिस पे यूएस को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, यूके को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, रशिया को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, आपके अपने गवर्नमेंट को कोई डिसएग्रीमेंट नहीं. Nobody else apart from you has claimed. वरना तो हर जगह पे न्यूज़ चैनल्स के ऊपर
आप अल जजीरा उठाए, आप स्काई न्यूज उठाए, आप हैरट्स को उठा लें, even they don't, even the Israeli government does not claim that Hamas happens to be the governing body in Hamas or in Gaza Strip. तो I don't know, आपके अलावा और कोई है नहीं. Congratulations, आपने एक बात सही की, they were. आपने एक बात सही की, वो था. तो शुक्रिया आपका. Thank you. So let's move on now. I think we have JKM. If you have to say something, please go ahead. Then we have to go to East Wind, and then we're going for final comments. Let's wrap it up. Everyone who wishes to give a final comments in regards to where they see where this is headed, what different countries and global leaders or religious leaders, अगर आपका religious angle है, उस पे ख्याल है, what will be the outcome? And then we'll just end the stream for today. This is going to be a series. This is just the very first conversation which has taken place on this, and we'll develop it further. So I think GKM has gone. He's left. So East Wind, you go ahead, and then we'll go to final comments. जी, तो सबसे पहले शाहजी, आई थिंक रुपेश झा इज बीइंग misquoted wrongly. He never said the killings of all the Muslims. He said the killings of those Muslims who support this organization called Hamas, which everybody here agrees that it is a terrorist organization. If this is a recorded room, आपका yours Hamas. Medusa ji, this is a recording room. नहीं, एक सेकंड, let me बिल्कुल मुझे misquote मत करो. He said आपका Hamas. फिर मैंने उससे पूछा कि आप किन लोगों की बात कर रहे हैं. He said those who talks about Jesus. Slowly, because he didn't have the guts to say it in my face. That all Muslim. So he was going round and round. There is a book. There is an ideology. What is an ideology? Islam is an ideology which all Muslims follow. ये बाकी मुसलमान क्या चोले बेचने आते हैं? वो इस्लाम फॉलो नहीं करते. सारे मुस्लिम, every single Muslim who call himself a Muslim, they follow Quran. ठीक है, कुरान में कहीं पे नहीं लिखा कि जूस को पकड़ के मारो. ठीक है, कहीं पे भी नहीं लिखा. That's why Jews and Muslims have lived together for the longest of time. ठीक है, before you guys even knew that they existed. They were living with Muslims peacefully. ठीक है, so continuously वो तो मैं जब उनको वो कर रही थी, कुरेद रही थी कि आपका इस बात से क्या मतलब है, आपका इसको एंड में वो अपनी वो पे आ गए कि हाँ जो भी उस कुरान को फॉलो करता है, they deserves to be killed. If that's not a call for genocide, I don't know why you're trying to change words for him. I think you should listen to what he was saying again. I think you should listen to what he was saying again. मेडुसा जी, आपसे मेरा एक सवाल ये है कि Hamas is a terrorist organization which we all agree, पर आप मुझे ये बताएं जो Muslims Hamas को support करते हैं उनके साथ क्या होना चाहिए? Do they also deserve to be punished or neutralized? Are you saying whoever would say that they support Hamas, they deserve to be killed? I am posing this question to you. You consider Hamas to be a terrorist organization, those who are complicit. It could be anyone. It could be anyone. That is any. I don't That's think not complacent. I don't think. एक second, Shaji. Medusa, I don't think. एक सेकंड, I don't think ये जो इजरायली फौजी जो कर रहे हैं, anyone who's supporting them should be killed. I don't think they should be killed. They have their opinion. They get to support whoever the fuck they want to. Okay, but Medusa should that's active militant should attitude, and that's a very messed up attitude. Just because I have an opinion, I deserve to be killed for that. Medusa ji got it. Medusa ji got it. But Medusa ji, I got it. But can I answer that question as well? Hold on. Go ahead, Shaji. Go ahead. Please go ahead. As well. And the thing is, at the end of the day, first of all, I don't think both of the things should be equated. Secondly, I would like to point one thing out. If it's a terrorist organization and somebody has sympathy in regards to that, that is obviously a danger to the society as a whole. So just like what the terrorist or an extremist is doing, I'm not going to go out and say
kill this person or kill that person or kill that person. The society is going to come into a disarray when you do that. So what you do is let the law and order take care of that. For example, in the UK, they've been very, very clear. Anyone who supports Palestine or flies the Palestinian flag is legitimate. Anyone who supports Hamas, which is a designated terrorist organization within the realms of the UK borders, is committing a crime. So if I'm going to see somebody outrightly support Hamas, I'm going to keep a distance. If I see they are a threat, I'm going to report them to the authorities, just like I would do the same to a white supremacist. I would do exactly the same to somebody who is basically a Jewish extremist, and you have those people. RDP is no saint. So one is in power and one is not. I hope that answers your question. We don't, as civilized people, go around saying kill this person and kill that person. In a civilized, mature society, you do not carry out extremism of any kind. Otherwise, there would be no difference between you and them. What you do is let the courts and the law take care of those who are supporting, sympathizing, organizing, committing to these organizations. Does that answer your question? And I think I've No, answered it Shaji. very comprehensively. Shaji, my question was not what should be done. What should be done? What should be done to the sympathizers? I mean, नहीं, फुरकान भाई Sympathizer, छोटा ठीक सा है? फुरकान भाई नहीं उसमें I mean, इस पे फुरकान भाई छोटा सा point. चले कर लें हाँ, कर लें। नहीं, point being, my question was not what should be done to the people who support Palestine. My question was what should be done to those who support the Hamas, this organization. जी Yes, उस पे and I answered मेरा that. They should be reported to the authorities. शाजी, when you are एक involved, सेकंड ना सुल्तान भाई, एक सेकंड यार देखो एक one second. देखो East, we come from countries, and even you come from a country. You are a responsible, honorable person of your community. I happen to be educated. I know you from the past. Yes, we disagree, but I do not think even you should be suggesting कि इसको मार दो, उसको मार दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो. No, if you find somebody to be extremist, you report them to the relevant authorities. That's what you do. You don't make emotional comments, उसे मार दो और इसे मार दो. वो तो फिर आप में और उस टेररिस्ट में क्या फर्क रह गया यार? और शाहजी इसमें जो फ्रेमवर्क होता है ना आपका लीगल सपोर्ट करने का और सिंपथाइजर्स का जो लीगल रिपरकशंस हैं दे आर वेरी क्लियर और वो ये नहीं है कि जाके उनको मार दो ठीक है I think guys is getting very late now. जी करण लेकिन एक चीज मैं फिर पूछूंगा there were people who labeled a certain person as बहुत तकलीफ होगी करण sorry and Eastwind I don't know Rupesh so I won't say that but थोड़ी बिटर बात करूंगा बुचर ऑफ गुजरात को सपोर्ट करने वाले को आप क्या कहेंगे क्या करो फुरकान भाई उस पे आते हैं पर आप नहीं एक सेकंड इट्स द सेम आर्गुमेंट बुचर ऑफ गुजरात जो है उसको सपोर्ट या उसके सिंपथाइजर्स को आप क्या करोगे आंसर ये है टेक इट टू द कोर्ट्स गो टू द अथॉरिटीज दैट्स व्हाट वी आर लाइक एग्जैक्टली डिफरेंट कंट्रीज के अंदर and the court has said he is not a butcher of Gujarat so you have to change the stance also do not go and tell people that you're going to kill them. Don't say certain people deserve to die. No, this is not how educated, mature people speak. देखिए जब कोई बोलता है तो जैसे डॉक्टर साहब आपने कहा ना तो आप जाएं you please read the 2002 court judgment of Gujarat rights and people Karan exactly going to the court now going to the court again. You're right. And the perception is a different thing and when you blame someone or when somebody is convicted Hamas की हम अगर बात करें तो it's end of the day you people are also going to agree to that they are banned all over the world there's a reason behind it
उसके पीछे कोई वजह ही होगी कि जो बैन किया हुआ है। अगेन इफ यू जी करण भाई एक पॉइंट और जो गुजरात में हुआ था ना, तो उसके भी कन्विक्शंस हैं, पीपल गॉट कन्विक्टेड फॉर दैट एंड दे गॉट जिसको कहते हैं कि सजा भी मिली है उनको सबको। तो आप जाके देख सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे मैं शादी आपकी पॉइंट मैं आपका सुन रहा हूँ काफी देर से, आप बार बार कह रहे हैं कि स्टेट कैन नॉट बी अगेंस्ट द पीपल ऑफ द लैंड। आई एग्री विद दैट, 100% agree. But Shadi, how would you justify this collateral damage which used to happen from United States in Pakistan from drones? Like innocent people died. What Pakistan did for them? You tell me. Yeah, Americans so are I'm against that. I've always said that was wrong. मेरा तो stance उस पे exactly same है, no difference. मैंने आपका तो है, मैं तो मानता हूँ, but sometimes states like इतनी Pakistan is just such a like nobody can doubt it, like they have strong army and everything. What they did? Nothing. They let innocent people die. तो अब करण वो भाई आके इस ड्रोन मार बात को देते आप हैं। नहीं समझिए, देखिए बात शादी ये है देखिए, कि in under the garb of nationalism, I'm not going to go out and state whether it is about the UK or it's about Pakistan, the two countries of heritage which I belong to, कि अगर वो कोई बात गलत कर रहे हैं तो मैं आके उसको justify करना शुरू नहीं कर मैं दूं, आपकी नहीं। बात मैं देखो मैं आप फिर देखिए मैं आपकी हाँ, तो बात it falls in the same category. That's the नहीं, answer to your question. मैं ये आपसे कह ही नहीं रहा हूँ कि आप इसके ऊपर कोई आप अपनी ओपिनियन, मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब स्टेट जो होती है ना, क्योंकि जो स्टेट के सर्कमस्टांसेस होते हैं, ओनली स्टेट नोस, नोबडी एल्स नोस दैट। उसको पता है कि क्या उसने करना है क्या नहीं करना। तभी तो कहते हैं ना कि वायलेंस का जो राइट है वो स्टेट के पास होता है। Karan bhai, I would like to point something out and very respectfully. So देखें, अगर तो ये बात है तो this should have been exactly the same जब 9/11 हुआ था, तो फिर जॉर्ज बुश को कहना चाहिए था कि कल से हम जितने भी यूनाइटेड स्टेट्स के सिटीजन मुसलमान हैं उनके अंदर से ये चीज़ हुई है, तो we're going to attack them. जब वहाँ पे के वाले जाके कालों को एथनिकली क्लेंस करते थे और अभी भी करते हैं, क्रिश्चियनिटी के नाम पे करते थे, हैपन टू बी क्रिश्चियंस या इवेंजेलिकल्स जो चीज़ें कैरी आउट करते हैं, तो फिर तो उनको भी मारना चाहिए अगर ये तरीका है। दिस इज नॉट हाउ अ स्टेट शुड बी बिहेविंग एंड मैं दैट तो इज कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग इट, is. मैं तो आपकी बात मान रहा हूँ। तो बस यही बट शादी द पॉइंट इज कि जो अमेरिका में अटैक किया, दे वर नॉट अमेरिकन सिटीजंस जिन्होंने किया था, और वो तो देन स्टेट गो आफ्टर देम, वो वहाँ इराक, पाकिस्तान तक, अफगानिस्तान तक पहुंचे। लेकिन करण भाई जो ब्रिटेन के अंदर थे वो तो ब्रिटिश ही थे ना, तो हाँ, फिर वो थे फिर यूके के अंदर गवर्नमेंट को डिसीजन लेना चाहिए था कि वो एथनिकली सारे एशियन थे, देसी थे, पाकिस्तानी थे और मुसलमान थे, वो रिलीजन जिसके साथ एसोसिएट कर रहे थे, तो आम मुसलमान कम्युनिटी को फिर वो स्लॉटर सिटीजन करते ऑफ द थे। लैंड। शादी अगर सिटीजन ऑफ द लैंड होगा तो फिर किसी को ब्लेम थोड़ा ना कर सकते हैं आप, वो आपकी धरती का बंदा है, तो आप कहीं भी जाके किसी को ब्लेम क्या करेंगे? अब ब्रिटेन का देखिए, मतलब ये so the difference is that यहाँ पे countries शादी which are not यहाँ apartheid. पे यहाँ पे नहीं देखिए प्रॉब्लम ना, ये आप है, इस चीज को समझें, the countries who do difference not देखो practice यहाँ पे जो apartheid as यार a शादी policy do not do that. शादी देखो Then we would, like Karan, then we would go back to the point. Let the courts decide. You can't give huge statements like कि रनु मार दो, ऐसे supporter है, ऐसे sympathizer है. That is calling for genocide. गुरुदेव, मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि जो गाजा स्ट्राइप या पट्टी जो भी उसको कहते हैं, वो इजरायली अथॉरिटी के नीचे नहीं आती है। It's for them, it's a different land. Borders Yes, exactly. That's established. No, that's actually not true. Under Trump's era, it was decided Palestine. जरा Google पे सर्च कीजिए, आपको पैलेस्टाइन नजर आता है, आपको गाजा स्ट्रिप एज अ एरिया नजर आता है, लेकिन अंडर द बॉर्डर्स ऑफ इसराइल, under preconditions. As far as the state of Israel and the Western countries are concerned, Palestine does not exist. As far as they are concerned, Gaza Strip is part of Israel as we speak. They say they endorse the two-state solution, but that is not the case. But the fact of the matter is they're practicing apartheid over there,
and genocide has been going on, and that does not तो शाह like जी we आपको ये तो rightfully मानना pointed करण भाई out. आपको क्या लगता है कि उसको करण ऑक्यूपेशन भाई क्यों यार कहते वो हैं? बात ये करते like बताते when हैं, we speak फैक्ट ये lot like we बताते हैं don't आपको other person's कि views. इजराइल की जो स्टेट है वो उसको ये लाइसेंस चाहिए था. So Sir, what Hamas has done is gone out and helped the state, genocidal state of Israel, a terrorist. What do you expect? A terrorist organization helped a Okay. genocidal apartheid practicing I think state Shari, we to are going kill Okay, innocent guys, people. It is guys, a yes. collaboration between Hamas and the state of Israel. What you're witnessing. Guys, we are over 28, 27 minutes now. Last comment, Karan said Shah, Medusa, फुरकान भाई एक and पॉइंट ले East. लीजिए प्लीज. Last comments, नहीं, last comments. First I'll go to Karan. And फुरकान उसके भाई I बाद was फिर interrupted by Karan भाई. Can I please नहीं 2-3 minutes East, engage me? just Yeah. एक सेकंड वेट कर लो. करण को कंप्लीट करने दो. I'll come back to you. And then in 3 minutes we have to close the room. Like we are over 27 minutes. Karan, go ahead. थैंक यू यार, मैं ज्यादा नहीं बोलना, मैंने सिर्फ इतना कहना था कि जो पॉइंट लेके आप आ रहे हैं ना कि एंड ऑफ द डे की जो वो टेरिटरी है वो इजराइल की, वहाँ पे गवर्नेंस या अथॉरिटी नहीं चलती है ना, उनकी पुलिस है वहाँ पे. इट्स काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लैंड. तो उनको वहाँ पे अपना वो लाइक दे कैन डू बिजनेस विद द अदर वर्ल्ड, लाइक जहाँ से भी उनको सब्सिडीज या पैसे मिलते हैं, दे कैन टेक इट, राइट. तो एक दूसरी टेरिटरी से आके एक दूसरी कंट्री में आके अटैक करना, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. बाकी जो बीच में आपके जैसे इंडिया में भी आप लगा लें या पाकिस्तान में भी लगा लें या किसी बांग्लादेश, इराक, किसी भी कंट्री का आप नाम ले लें, कि जो वहाँ के लोग जो काम करते हैं तो स्टेट उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है. जैसे इंडिया में भी कोई काम हो, जैसे कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो, या जो किसी वॉक ऑफ लाइफ से आता हो, अगर वो बंदा इंडिया में क्राइम करता है तो इंडियन स्टेट ये तो नहीं कहती कि यार ये पुर्तगाल को जाके पकड़ लो, ये क्रिश्चियन ने ये काम किया. तो वो तो स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है ना इस चीज की. बट यहाँ पे तो क्लियर केस है कि जो अभी हमास ने किया है, दे केम फ्रॉम द अनदर टेरिटरी. अगर ये इजराइल के अंडर होते तो वुड बी दे एबल टू मैनेज टू गैदर सो मच वेपन्स एंड एम्युनिशंस? नहीं होता. तो यहाँ पे तो यही मेरा पॉइंट है, बाकी आप अपना रखें उसमें वो बात. Thank you Karan. Thank you. East, go ahead and no responses, just final statements. जी East. तो जी एक बड़ा अच्छा पॉइंट, एक काफी इट वाज अ गुड पॉइंट कि व्हाई शुड इवन द सपोर्टर्स ऑफ हमास दे शुड बी पनिश्ड, राइट? व्हाई आर दे सफरिंग फ्रॉम दीस थिंग्स? इनको कोर्ट ले जाना चाहिए. तो मेरा यहाँ पे सवाल ये है, क्या जो एक्टिव मिलिटेंट्स है, जो हमास के जो एक्टिव मिलिटेंट, should they also be taken to court, or can they be neutralized? Would you also mind if they are being neutralized by the Israelis? तब भी क्या आप उनके अगेंस्ट होंगे? So the point is the authorities come in various forms. कोई civil matters होते हैं, कोई army के matters होते हैं. So like I pointed out, the relevant authorities should take care of criminals of all kinds, whether they are petty or extremists. Whether they are Muslim, Jews, Christians, Hindus, whatever they are, doesn't matter. Irrelevant. Okay. Can I say that it is wrong by Israeli to persecute the Hamas also? Okay. Point taken. Thank you. But you need to read international relations 101. Okay, what is internal, what is external affairs of a land. And then I think आपको समझ आ जाएगी ये आपका फुरकान भाई कुछ गलत हुआ है तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट में केस करें ना. यहाँ पे मतलब इंटरनेशनल कोर्ट की बात ही कर रहा हूँ. यार एक बात मुझे बताओ, ईस्ट विंड, is everything which authorities do taken into court? कभी आपने पुलिस मुकाबलों के बारे में नहीं सुना है? कभी आपने स्टेट एक्सिक्यूशंस के बारे में नहीं सुना है? कभी आपने मिलिट्री एक्सिक्यूशंस के बारे में नहीं सुना है? सो आई सेड कि मैं एक आम आदमी हूँ, एक आम सिटीजन को अपने लेवल के अंदर रहना चाहिए. आप भी एक आम आदमी हो. डू नॉट विश फॉर किलिंग्स ऑफ अदर्स. लेट the relevant authorities take care of the situation. Like I said, if I come across an extremist, I would report that person regardless of what. If I see that this person is a danger to the society, there is a protocol for local normal citizens to follow,
and you should be following what it is in your country. ये तो बोंगी है, Okay. इसको भी मार दो जी. और उसको भी मार दो और ऐसे कर Thank you. दो. What are you going to जी. achieve out of that? शाह जी, जो thank you. state ने करना होगा by law, वो उसके साथ करेगी. Thank you, चाहे मैं thank you, चाहूँ Shaji. या नहीं. And East, I think मेरा वही कमेंट रहेगा. इंटरनेशनल रिलेशंस की मैंने बात की, कोर्ट की बात नहीं की. इंटरनेशनल रिलेशंस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इंटरनल और एक्सटर्नल अफेयर्स क्या होते हैं, you need to know that. मुझे वो आपके आर्गुमेंट में फ्लॉ लगा है. We'll move to Sid. Any last comments? Yes, Furqan bhai. There is a reason why it is said that Gaza is occupied by Israel, even though a lot of people are saying that it's a completely separate piece of land. The water of Gaza is controlled by Israel. The electricity of Gaza is controlled by Israel. The roads and checkpoints of Gaza are controlled by Israel. The fuel input of Gaza is controlled by Israel. How aids can reach into Gaza is controlled by Israel. Every facet of life of the people who are living in Gaza is controlled by Israel. And then you mock these people by saying that they are completely independent. They are yelling. They are yelling blood that we are occupied. Our food, our water, our electricity, our media, our internet, all of it, the way that we can communicate with the rest of the world, each and every facet of their life is being controlled by their occupiers who at their own whim can kill any particular one of them and do so, and they are documented and they are on camera. They are doing all of that shamelessly. As we have seen, it is on camera. They are not even hiding any of that. The atrocities that the Israeli government, the apartheid government, the terrorist government of Israel has been doing, it is doing so shamelessly in front of everybody. And then you are questioning, why are the Gazans saying that supporting Hamas? Why is Hamas controlling Gaza? They are not controlling Gaza. Israel is controlling Gaza. It's an occupied territory. And Israel is doing whatever the hell they want to the people of Gaza. Okay, thank you, They Sid. take their lives whenever. Yeah, thank you, Sid. Rupesh, any last comments and make it brief अगर हैं. I want to point out that since you have said you can't be both perpetrators and play victim card thereafter, which some people are really experts. And I want to tell you, please compare the living standards of Palestinians with your own if you can. They have much better resources than any other people. They are not dying, and if you go and see Gaza Strip, and you will see long, tall buildings and all facilities which are they are not Uganda, Kenya, or something. They are well fed and well kept. I have seen with my own eyes, so it's my first hand experience. So that is the thing I want to tell you. And the victim card playing, please stick to the point. Thank you very much. Okay, thank you. The vocabulary that you used, well kept and well eaten, whatever, it reminded me of when I used to keep dogs. To be fair, and that's derogatory, I would say. Those like I would give my comments and then I would move to Medusa for her final comments. मैं ये कहूंगा कि मैं जिस चीज पे बिलीव करता हूँ, लाइक किसी एक इनोसेंट की लाइफ जाती है तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पूरी इंसानियत की लाइफ जाती है, और चाहे वो जिस साइड का भी हो, इनोसेंट अगर डाई कर रहा है दैट इज रॉन्ग एंड दैट्स टेररिज्म 101. अगर आप किसी इनोसेंट को, अनआर्म्ड बंदे को मार रहे हैं, दैट्स टेररिज्म 101. और वो जिस साइड का भी होगा, आई वुड कंडेम दैट. ए बी, जब भी ये मैं इंटरनल स्ट्रगल्स और ये देखता हूं कि
फ्रीडम फाइटिंग और रेजिस्टेंस की बात होती है ना, देयर इज अ सॉन्ग क्रैनबेरीज का ज़ॉम्बी, वो मुझे याद आता है। उसमें वो देयर इज अ फ्रेज के इट्स नॉट योर फैमिली, इट्स नॉट माय फैमिली, समथिंग अलोंग दीस लाइंस। जब अपनी फैमिली पे आती है ना, फिर बात समझ आएगी। हमें भी, आपको भी। उससे पहले नहीं आएगी। और वो चाहे जिस भी साइड का हो, मुस्लिम हो या ज्यू हो। जो 7th को हुआ, जो अब हो रहा है, जिनकी फैमिलीज मर रही हैं, उन्हें समझ आ रही है क्या हो रहा है। और ये सिंपथाइजर्स को जो मारने की बात है, वो कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा। इट्स नॉट यू, नॉट मी। बहुत सी और एग्जांपल्स आपके इंटरनली मिल जाएंगी, जिस पे हम बात करेंगे बाद में। I would move on to Medusa. Medusa, last comments and then give the closing statement and close the room. Acha, my last comment is that I actually agree with Rupesh, surprisingly. I agree with Rupesh that the perpetrator of Gaza, the Israeli forces, do not get to play victim cards. They've killed enough Palestinians. And I think this is what they brought upon themselves. I do not support it. I do not endorse it. Israeli children are children after all, but they brought it upon themselves. And even what Hamas is doing, they're kind of not helping the Palestinians. But I think it's inevitable. What's happening in Israel and Palestine, and I guess we will have another session regarding this topic because it's a long one and it's an ongoing one. Please subscribe and follow the channel. We will make more discussion for you, platforms for you, and that's all about it, I Medusa, guess. we have forgotten the last words of Shahji. We should include I that have as well. to just make a very small point. This is an ongoing thing, and those people who say you can't play a victim, both sides can be victims. There can be victims on both sides. So you're telling me all those people who claim that one side is a victim over the other, अगर आप एक बंदे की बेटी को मार दें और फिर जाके एक और बंदे की दूसरे लोग रिटेलिएशन में बेटी को मार दें, तो दोनों की बेटियां मर गई हैं. Both of them are victims. None of them deserve to die, and we need to remember that. कि आपकी साइड के ऊपर भी गलती होगी जिनको आप सपोर्ट करते हो, दूसरी साइड के ऊपर भी गलती होगी, and you have to point that out. We have to look above these things. That's the whole purpose of this conversation, that we're looking beyond narratives. We're looking at what the facts are. If there are two groups of people who've been killed, then we are going to say it's the two group of peoples जो civilian वहाँ पे Jewish origin के मरे हैं, जिस रीजन से भी मरे हैं वो innocent थे, और जिनको गाजा स्ट्रिप के अंदर मारा जा रहा है वो भी innocent हैं. Because Hamas is a terrorist organization does not mean all Muslims are. Just like if not all Jews are supportive of the genocidal apartheid state of Israel, so we are not going, if they have died or normal people have died, we do not condone that. We condemn that equally. Thank you very much. Chalo, I'm gonna end the session. Okay, bye bye.